नेट चालू करो ना। चालू नहीं है। नहीं, ये मेरे मोबाइल पे मैंने चालू किया। Good morning, everyone. Is it I'm audible, everyone? Yes. Give me a response, everyone. Is it I'm audible? Yeah. Yes, Neha. Okay. So definitely today's I'm going to provide you the revision. हम लोग पूरा रिवीजन कवर करने वाले हैं रिगार्डिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा रिवीजन आज हम कवर करेंगे। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिवीजन में व्हाट वी आर गोइंग टू बेसिकली कवर अप। सी, सबसे पहला पॉइंट आई विल टेल यू द एबीसी एनालिसिस। यहाँ पे एबीसी एनालिसिस कौन कौन से, आपको कौन कौन से चैप्टर अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। जस्ट वेट एवरीवन। Now, dear, very first point, what will be the ABC analysis? Which topic you have to focus more? First, in A category, which topic you need to focus, huh? Then B category and C category. Now, see everyone, सबसे पहले ए कैटेगरी में आपको कौन से चैप्टर पे फोकस करना है जो मैक्सिमम मार्क्स के लिए आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। ओके, फर्स्ट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
Dear, if you look at your index, if you look at your index, you have two chapter, that is marginal costing and application of marginal costing. ओके, ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने, मार्जिनल एंड एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। उसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है आपके पास। देन आफ्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग you have budgetary control. Clear? These are a category of chapter, and this a category of chapter will help you in this paper also, and in paper number 8 also, that is in costing, because the topic is the same. So marginal costing आपका repeat यहाँ पे भी हो रहा है, and paper number 8 में भी हो रहा है, costing में भी हो रहा है। Standard costing आप and budgetary control आपके that is paper number 12 में भी cover हो रहा है, and that is cover in paper number 8 also in costing. So it's a common topic जिसका वेटेज भी मैक्सिमम है। ओके, वेटेज भी मैक्सिमम है, कितने मार्क्स के लिए आएगा वो भी मैं आपको बेसिकली बता दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, दैट विल अप्रोक्सीमेट कितने मार्क्स का आना चाहिए। तो फर्स्ट यू हैव टू डू study as per this order. Cover your marginal costing, application of marginal costing, but standard costing and budgetary control, very very important. Now a B category में we may say that ABC activity based costing, ये आपको करना है। ट्रांसफर प्राइसिंग, ये आपको करना है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, ओके। And coming towards, I may also say that introduction to management accounting. And category C में responsibility accounting जाएगा, divisional performance, decision theory. Okay, now weightage. Dear, these are approximate weightage I'm giving you, not exact, क्योंकि वो हमेशा change होता है। Category A, 101%, it will be 50% weightage. Category B, it will be 30% wastage. Category B का weightage 30% है, A का weightage 50% है, and definitely C का weightage will be around 20%. This will be the weightage approximately. Okay, तो पहले आपको कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करना है? मार्जिनल कॉस्टिंग पे, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग पे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे आप फोकस करोगे, बजटरी कंट्रोल पे आप फोकस करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल प्रॉब्लम विच इज देयर इन अवर जेकेसी स्टडी मटेरियल में जो है, आपको जेकेसी स्टडी मटेरियल के सारे सम सॉल्व करने हैं। अभी जेकेसी का स्टडी मटेरियल मींस इट इज नथिंग बट डियर वी कैन से दैट इट इज आवर स्टडी मटेरियल प्रॉब्लम। सीएमए का जो स्टडी मटेरियल का प्रॉब्लम है, दैट वी हैव कवर इन जेकेसी। देन यू हैव टू do all the problem
बेस्ड ऑन जेकेसी स्टडी मटेरियल, मतलब आपको आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस के तौर पे यू शुड सॉल्व फ्रॉम फ्रॉम द ईयर 2016 ऑनवर्ड्स। 2016 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे, इफ यू सॉल्व दैट मच, इनफ, मोर देन इनफ। स्टडी मटेरियल एंड एग्जामिनेशन प्रॉब्लम फ्रॉम 2016 ईयर, मोर देन इनफ, आई एम टेलिंग यू। उसके अलावा आपको कोई बुक रेफर करने का जरूरत ही नहीं, मोर देन इनफ। बी कैटेगरी में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रांसफर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टोटल थ्योरी कंप्लीट। इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। एग्जामिनेशंस का 2016 से लेके 2024 तक जो भी स्कैनर में आपको क्वेश्चन दिखता है, सब पढ़ लो अच्छी तरीके से। एंटायर टॉपिक विल बी कवर अप। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग का ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में नहीं था। सो डेफिनेटली एग्जाम्स की जितने भी सम्स पूछे हैं वो तो आपको सॉल्व करने हैं, और अपने स्टडी मटेरियल मॉड्यूल में जो सम दिया है दैट यू यू हैव टू फोकस। नाउ विद रिस्पेक्ट टू सी कैटेगरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में डियर हमारे पास दो ही क्वेश्चन है, थ्योरी है जय। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा थ्योरी है। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दिस difference between management and financial accounting, just you have to go through at once. Okay, now रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछता है, और वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आई हैव टोल्ड यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो गया, डिविजनल परफॉर्मेंस हो गया, डिसीजन थ्योरी। सी कैटेगरी का जितना भी थ्योरी है मॉड्यूल में, आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में थ्योरी और उसका आंसर दिया है, प्लीज उसको पढ़ो अच्छे से, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन मोर और लेस सेम ही पूछेगा जो मॉड्यूल में दिख रहा है आपको, घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। और एग्जाम्स के 2016 से लेके अगर आप देखोगे 2024 तक, को बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिविजनल एंड डिसीजन। रीजन फॉर दैट, क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस में नहीं था। तो डेफिनेटली देयर आर वेरी फ्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन, यू शुड कवर अप ऑल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। मॉड्यूल का बैक साइड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जितना सम्स दिया है, थ्योरी दिया है, वो करोगे। एग्जामिनेशन में जो थ्योरी पूछा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिविजनल एंड डिसीजन थ्योरी में, उतना करोगे, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, आई एम टेलिंग यू। और डिविजनल परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल थ्योरी क्वेश्चन इज नथिंग बट डियर, मॉड्यूल के बैक साइड पे आपको दिया हुआ है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, को उतना ही पढ़ना है। एंड जितना न्यूमेरिकल्स हमने क्लास में सॉल्व किया, प्लस एग्जाम्स का जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिल रहा है 2016 से लेके 2024 तक, वो न्यूमेरिकल्स आपको सी कैटेगरी में कवर करना है, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। और कोई स्टडी मटेरियल आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ थ्योरी आपको चाहिए तो थ्योरी हमारे स्टडी मटेरियल में भी है जेकेसी का, देयर ऑल्सो वी हैव डन अ मार्किंग। एक बार चाहिए तो मैं रिमाइंड करा दूंगा आपको। ओके, नाउ everyone try to understand the thing. First, we will cover A category का revision. Okay. Now A category में marginal costing, standard costing and budgetary control. What we have covered? CDL. Marginal costing में which are the formulas we have learned? एक बार रिवाइज करते हैं. Sir, very first formula, same. We have learned in marginal costing. Can I say first formula is contribution? Sir, what is a formula for contribution? Sales minus variable cost. Second formula, sir. Contribution का second formula. Fixed cost plus profit. That is the second formula we have learned. Then profit volume ratio.
What formula we have learned in profit volume ratio? First, contribution divided by sales into 100. B, change in profit divided by change in sales into 100. ये एक फॉर्मूला आपने सीखा था. डियर एबीसी जय, मैंने बताया ना, क्लियर कट तो बताया ना क्या है, ये रहा ना एबीसी. अभी इसमें आपको क्या डाउट है? चैप्टर का नाम लिखा है, कौन से एनालिसिस में ए कैटेगरी का वेटेज क्या होगा वो भी मैंने दिया है आपको. बी का वेटेज क्या होगा, सी का वेटेज क्या होगा वो भी मैंने आपको दिया है. नाउ व्हाट इज योर डाउट? हाँ तो अभी देखो ना वो नीलेश, उसमें जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है 2016 के जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं दो, तो ओल्ड सिलेबस में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविजनल परफॉर्मेंस का चैप्टर नहीं मिलेगा. आपको जो जितने भी सम्स और प्रॉब्लम मिल रहे हैं एग्जामिनेशंस के, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविजनल, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये पुराने सिलेबस में नहीं था. जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. हाँ ठीक है ना, देखते हैं ना, डोंट वरी. विल सी दैट. हाँ, ओके. लास्ट ईयर का पेपर आप बोल रहे हो ना, विल विल सी दैट. ओके, चलो अब मैं आपको पहले रिवाइज कराऊं हर चैप्टर को. चलो देखो, कंट्रीब्यूशन का पहला फॉर्मूला था सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन का सेकंड फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. पीवी रेशियो का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. एंड सेकंड फॉर्मूला इज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, राइट? थर्ड फॉर्मूला जो आपने सीखा है व्हिच इज ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट. क्या फॉर्मूला था अपना ब्रेक इवन पॉइंट का? पहला फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. ये रुपीस में फॉर्मूला था. ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, fourth is, we can say that margin of safety. We have learned two formulae. MOS. First formula is actual sale minus break even sales. Right? This we have learned. Then MOS का आपने second formula भी सीखा. What is the second formula? Profit upon PV ratio. Profit upon PV ratio. Fine. Then we have learned a formula of desired sales in rupees. Formula is fixed cost plus desired profit divided by PV ratio, or desired sales in units. Formula is fixed cost
plus desired profit divided by contribution per unit. This is in units. And now we have learned this formula regarding desired sales. And finally, we have learned one more formula, which is desired profit. Right here? Desired profit का formula देखो यहाँ से ही बना था. If you remember, desired sale into PV ratio minus fixed cost. Desired sale into PV ratio minus fixed cost. Okay. This is a formula of desired profit. Chalo. Now, these are all the formulas we have covered up here under marginal costing. And you are well aware about all these formulas. Okay. These are the basic formulas जो हमने marginal costing में सीखे थे. I will try to cover which are the types of problem we have done in marginal costing. Type of problem. One is simple formula based problem we have done. Formula based problem आपने complete किया था. Second, sales mix वाला problem cover किया था. Category of sales mix. Remember? ये आपने cover किया था. थर्ड कैटेगरी हमने कवर किया था लिमिटिंग फैक्टर. लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन कवर किया था. सेल्स मिक्स का प्रॉब्लम कवर किया था और कुछ बेसिक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम कवर किया था. वी हैव कवर अप मेक वर्सेस बाय. रिमेंबर? मेक वर्सेस बाय. फिफ्थ, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर. एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर. राइट. वी हैव कवर. सो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम हमने कवर किया था सिंपल. सेल्स मिक्स कवर किया था. डिसाइड सेल्स मिक्स. देन वी हैव कवर अप लिमिटिंग फैक्टर्स. लिमिटिंग फैक्टर हमने कवर किया था. कभी कभी लिमिटिंग फैक्टर सेल्स इज अ लिमिटिंग फैक्टर था. सो डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पीवी रेशियो. राइट. कभी कभी लिमिटिंग फैक्टर आपका हो जाता था रॉ मटेरियल इज अ लिमिटिंग फैक्टर. डिसीजन इज टेकन बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल. कभी कभी लेबर इज अ लिमिटिंग फैक्टर. डिसीजन इज बेस्ड अपॉन contribution per labor hour. Remember, that is contribution divided by labor hours. Then sometime machine hour is a limiting factor. If machine hour is a limiting factor, decision is taken on the basis of contribution per machine hour. Remember, we do ranking. Then ranking के basis पे हम allocation करते थे. Then we have basically make versus buy. What we do in make versus buy? If you make, we consider what is your manufacturing cost. And if you remember, manufacturing cost में हाँ, definitely. Continue or not to manufacture a product also we have cover up. Yes, dear. Now, make versus buy में dear. Make versus buy में. If you remember, we have calculated cost of manufacturing a product. और cost of manufacturing a product में आपने fixed cost consider लिया in order to make the product. Because fixed cost for decision making is irrelevant cost. So we have considered manufacturing cost, exclusively variable cost. And if you buy
व्हाट इज द परचेस प्राइस कोटेड बाय द सप्लायर। आप अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को सप्लायर के कोटेड प्राइस से कंपेयर करते थे, और कोटेड प्राइस से कंपेयर करने के बाद फिर डिसीजन लेते थे वेदर टू मेक और वेदर टू बाय। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर, वेदर द ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। ठीक है, उसमें वी बेसिकली डिसाइड कि हमको ऑर्डर डोमेस्टिक कस्टमर दे रहा है या फॉरेन कस्टमर दे रहा है। इफ यू रिमेंबर, फॉरेन कस्टमर का प्राइस मे वेरी विद डोमेस्टिक प्राइस, इट डजंट अफेक्ट द मार्केट, क्योंकि फॉरेन कस्टमर हैज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद डोमेस्टिक कस्टमर। तो हमने डोमेस्टिक कस्टमर का प्रॉफिटेबिलिटी निकाला था, हमने फॉरेन कस्टमर का प्रॉफिटेबिलिटी निकाला था, फिर दोनों को ऐड करके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी निकाला था। जब अगर हमारा करंट प्रॉफिट से ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, तो हम बोलते थे ऑर्डर एक्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन अगर ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद हमारा ऑर्डर, अगर हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, तो ऑर्डर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। या वी विल कंसीडर वेरिएबल कॉस्ट, यस, राइट। नाउ अब जैसे आपने बोला कंटिन्यू और नॉट टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, कंटिन्यू और नॉट टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट डियर, अगर आपका प्रॉफिट फ्यूचर में रिड्यूस हो रहा है तो मैं क्यों मैन्युफैक्चर करूंगा? डेफिनेटली आई विल नॉट मैन्युफैक्चर, आई विल कंटिन्यू डूइंग अ मैन्युफैक्चरिंग इफ माय प्रॉफिट इज इंक्रीज। सो हमने कैलकुलेट किया था इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या इंक्रीमेंटल लॉस इन दैट पर्टिकुलर केस, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टेकन अ डिसीजन वेदर द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट शुड बी कंटिन्यू और नॉट। So these are the kinds of problem we have covered up in marginal costing. ठीक है, अभी based on that we will definitely cover little bit of questions which will cover variety variety of conditions. ठीक है, now तो ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में कवर किया था। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट जो आता है वो है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहले हमने कौन कौन से फॉर्मूले कवर किए, वी विल रिवाइज। फर्स्ट वी हैव कवर ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस, हमने कवर किया था। चलो, मटेरियल वेरिएंसेस में हमने कौन कौन से फॉर्मूले कवर किए थे, वी विल सी दैट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सर इसमें आपने कवर किया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, व्हाट इज द फॉर्मूला? देखो डियर, एग्जाम में कोई भी वेरिएंस आ सकता है, आपको सारे वेरिएंस प्रिपेयर करके जाना है, देयर इज नो स्टैटिस्टिक्स। बट यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा डियर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एटलीस्ट देयर विल बी अ टू क्वेश्चन यू विल गेट इन योर एग्जाम्स, either it will be 10 marks, 10 marks, 20 marks, or it will be 18 marks, 16 marks. Okay. But approximately I will tell you maximum 20 marks will be the weightage of this topic. Why? क्योंकि कम से कम दो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी मिलने वाला है। ओके, माय एडवाइस इज यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आएगा वो मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस से आएगा, एक क्वेश्चन बनेगा। और एक क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, सेल्स वेरिएंस, सेल्स एंड प्रॉफिट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेल्स एंड प्रॉफिट वेरिएंस। ज्यादातर एग्जाम में एक क्वेश्चन जो होता है वो या तो मटेरियल या लेबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन जो आता है वो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पूछता है। सो दे नॉर्मली दीज पीपल आर आस्किंग, बेसिकली वी कैन से दैट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस ये एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछेगा। ओके, सो आप अच्छे से प्रिपेयर करना है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। व्हाट इज माय सजेशन?
सेल्स वेरिएंस इज इजी, कंपैरेटिवली वेरी इजी, खाली आपको फॉर्मूला यूज करना है. सेल्स एंड सेल्स मार्जिन वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस इजी, इट्स नॉट टफ, रिमेंबर. बट हाउएवर जो टफ है, जो लिटिल बिट कैलकुलेशन है जिसमें, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंस. और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का क्वेश्चन वो पूछ रहा है, रिटर्न में पूछ रहा है. So definitely you need to give a more focus on fixed overhead variance, उसको आप अच्छे से करके जाओगे. बाकी मटेरियल लेबर या सेल्स वेरिएंस आ भी गए एग्जाम में, तो यू विल बी इजिली एबल टू मैनेज एंड डू दैट पर्टिकुलर. ओके, सो डू लिटिल बिट ऑफ मच मोर प्रैक्टिस विद फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. नाउ चलो, अब हम सारे वेरिएंस के एक बार फॉर्मूलेस देखते हैं. ओके डियर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? इज इट स्टैंडर्ड कॉस्ट में एक्चुअल कॉस्ट माइनस, राइट डियर? दिस इज द फॉर्मूला यू हैव. Then again, your material cost variance will get divided into two parts. Material quantity or usage variance, and material price or rate variance. Material quantity or usage variance, material price or rate variance. Quantity का formula, standard quantity minus actual quantity into standard rate. Standard quantity minus actual quantity into standard rate. Material price variance, standard rate minus actual rate into actual quantity. Whenever we are comparing with a quantity, whenever we are comparing with a quantity, always it should be multiplied by standard rate. Why? Why? Because प्रोडक्शन मैनेजर, क्या लॉजिक था? प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वांटिटी. प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वांटिटी एंड नॉट फॉर रेट्स. That's why it will never be multiplied by actual rate. It will be multiplied by always standard rate. राइट, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट. क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है क्वांटिटी की वजह से अगर नुकसान हुआ ना फैक्ट्री में, तो मैं जिम्मेदार हूं. लेकिन रेट की वजह से मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ. प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलता है? रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल प्राइस मैनेजर होता है, रेट मैनेजर होता है. आप रेट मैनेजर से बात कीजिए. हाँ, क्वांटिटी का की वजह से नुकसान होता है तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ. तो इसलिए प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आपने मैंने सोची थी, उसको मैं एक्चुअल क्वांटिटी से कंपेयर करूंगा. लेकिन आप बोलोगे कि मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट करना है, वो मैं नहीं करूंगा. स्टैंडर्ड रेट से एक्चुअल रेट अगर बढ़ गया, तो भाई स्टैंडर्ड रेट से एक्चुअल रेट अगर बढ़ गया तो नुकसान जरूर हुआ. लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा उसके लिए मैं थोड़ी जिम्मेदार था, उसके लिए तो जिम्मेदार परचेज मैनेजर था. परचेज मैनेजर से उसका आर्ग्यूमेंट करो ना. आप मुझे मुझे क्यों आर्ग्यू कर रहे हो? ठीक है, इसलिए फॉर्मूला बोलता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट करेंगे, कभी भी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट नहीं होता है. तो लॉजिक क्या था? हमने सीखा था व्हेनेवर वी आर कंपेयरिंग विद अ क्वांटिटी, whenever we are comparing with a quantity, always multiply by standard rate. Sir, what is the logic? Logic is production manager is responsible for variation in quantity but is not responsible for variation in price. Okay, similarly material price variance और rate variance. अभी प्राइस और रेट वेरिएंस के लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार है हमारा परचेज मैनेजर. तो परचेज मैनेजर क्या बोलता है? परचेज मैनेजर बोलता है देखो, अगर मटेरियल का भाव बढ़ गया, हमने सोचा था माल 100 रुपए में मिलना चाहिए, लेकिन सेम मटेरियल अगर मार्केट में 120 रुपए में मिला, तो भाई एक्चुअल प्राइस तो 20 रुपए हमको ज्यादा देना पड़ा. वो एक्चुअल प्राइस 20 रुपए जो ज्यादा देना पड़ा, ये मेरा नुकसान है, ये हमारी फैक्ट्री का नुकसान है. हाँ, लेकिन
परचेज मैनेजर क्या बोलेगा, सर फॉर दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, फॉर दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी आपने बोला स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंज्यूम होना चाहिए था 20,000 kg, लेकिन एक्चुअल में 25,000 kg कंज्यूम हो गया। तो फॉर्मूला बोलता है वो जो एक्चुअल कंज्यूम हो गया ना 25,000 kg, वो कंसिडर करोगे। क्यों कंसिडर करोगे? क्योंकि परचेज मैनेजर बोलता है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वांटिटी। क्वांटिटी की वजह से अगर नुकसान हो गया तो आप मुझे आर्ग्यूमेंट मत करो, वो आर्ग्यूमेंट किसको करो, प्रोडक्शन मैनेजर को। इसलिए फॉर्मूला बोलता है ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो हमने क्या सीखा था, वेनेवर वेनेवर वी आर कंपेयरिंग विद द रेट, whenever we are comparing with the rate, dear, whenever we are comparing with the rate, always multiply by actual quantity, always multiply by actual quantity. So whenever we are comparing with the rate, always multiply by, always multiply by actual quantity, right? Then quantity में variations होने के दो reasons थे, तो हमने material quantity variance को फिर ना और दो पार्ट में डिवाइड किया था। Sir, which are the two part we have divided? Okay, sir. Material quantity or usage variance. Okay. Now, so material mix variance and material yield variance, if you remember. Sir, what is the formula for material mix variance? What formula we have used? Revised standard mix quantity. Revised standard mix quantity minus the actual quantity. Revised standard mix quantity minus actual quantity multiply by standard rate. Sir, क्या logic है? What is the logic of standard rate? Once again, I'm repeating the same thing. Whenever we are comparing with the quantity, क्या कंपेयर कर रहे हो? क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हो। Always multiply by standard rate ना? Hmm? And how we calculate revised standard mix quantity? Revised standard mix quantity A, B, C में ऐसे bifurcate करते थे आप। तो A का स्टैंडर्ड क्वांटिटी आउट ऑफ टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए कितना कंज्यूम हुआ, लेकिन आपने स्टैंडर्ड नहीं प्रोड्यूस किया था, एक्चुअल किया था, सो मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी आप करते थे। ओके, वी हैव डन दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड वी हैव कैलकुलेटेड रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी। whatever is revised standard mixed quantity that will be deducted from actual quantity multiplied by standard rate. Next is what? Next is we can say that material yield variance. Yield. Dear, yield means what? Yield is called total. Total. We have learned this formula with respect to input. So हमने formula क्या सीखा था? हमने formula सीखा था standard total input. Standard total input में से माइनस किया एक्चुअल टोटल। Standard total input minus actual total input into standard weighted rate into standard weighted rate. तो स्टैंडर्ड टोटल इनपुट से माइनस करोगे एक्चुअल टोटल इनपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेटेड रेट विल बी द फॉर्मूला फॉर yield variance. Whenever you are comparing with a quantity, input मतलब quantity हुआ multiply by standard। लेकिन सर ये फॉर्मूले में आपने स्टैंडर्ड रेट नहीं लिया, ये फॉर्मूले में तो आपने स्टैंडर्ड वेटेड रेट लिया। क्यों आपने स्टैंडर्ड वेटेड रेट ही क्यों लिया? Why you have considered standard weighted rate? I'm not speaking about individual material quantity, I'm speaking about total quantity। ए बी सी, मटेरियल ए बी सी तीनों का मिला के टोटल कितना है, दैट इज कॉल्ड इनपुट। सो सर इन फॉर्मूला आई एम कंसिडरिंग टोटल इनपुट, स्टैंडर्ड टोटल इनपुट माइनस एक्चुअल टोटल इनपुट। So when you are comparing with a total input, it will not be multiplied by individual material standard rate. Then definitely we have to use in a formula weighted rate. What do you mean by standard weighted rate? स्टैंडर्ड का कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड का क्वांटिटी विल गिव यू स्टैंडर्ड वेटेड रेट। सब फॉर्मूले में स्टैंडर्ड वेटेड रेट इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल क्वांटिटी नहीं है,
टोटल क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड की टोटल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल की टोटल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड वेटेड रेट. क्लियर? This five formulas we have learned in material variances and we have done verification also. चलो मैं एक बार verification भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखूंगा. Sir, what verification we have done? And in examination year, always advisable. मैं आपको यही बोलूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिफिकेशन जरूर करना. सी डियर, आपका फॉर्मूला, आपका आंसर परफेक्ट है, आपने वेरिफिकेशन भी किया है. क्वेश्चन 7 to 8 मार्क्स का है. आई एम टेलिंग यू, एग्जामिनर हैज नो ऑप्शन टू डिडक्ट योर मार्क्स. आप वेरिफिकेशन भी करके आओगे, एग्जामिनर के पास कोई चांस ही नहीं है ना आपका मार्क्स डिडक्ट करे. सी डियर, इट्स अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे यू शुड ट्राई टू गेट फुल आउट ऑफ फुल, and you will get full out of full marks provided you doesn't give any opportunity to your examiner to deduct your marks. If you do verification, he has no option to reduce your marks. आपके सारे आंसर्स करेक्ट है तो कहां पे मार्क्स रिड्यूस करेगा वो. So material cost variance equal to material quantity variance plus material price variance. See, we have learned this, है ना. Right. और सेकंड वेरिफिकेशन आपका क्या था? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस, है ना, plus material yield variance. These are the two verifications. Clear? Now, चलो अब चलते हैं लेबर लेबर वेरिएंस. अब मैं आपको लेबर के फॉर्मूले भी एक बार रिवाइज करवाऊं. लेबर वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंस. सर लेबर वेरिएंस में पहले था लेबर कॉस्ट वेरिएंस. फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम जो मटेरियल का फॉर्मूला है, वही लेबर का भी फॉर्मूला है. सिर्फ वहां पे आपने क्वांटिटी यूज किया था. सर यहाँ पे आप क्वांटिटी की जगह पे आवर्स यूज कर रहे हो. दैट इज द ओनली डिफरेंस. लेबर कॉस्ट. फर्स्ट फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. Efficiency of labor is always calculated in terms of hours. In terms of hours. So labor efficiency को आपने कैलकुलेट किया था in terms of hour. तो सर आपने फॉर्मूला क्या यूज किया था? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर वर्क फॉर ईयर. वर्क फॉर. कभी कभी हम फॉर्मूले में वर्क फॉर नहीं लिखते. हम आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपने फॉर्मूला यूज कर लिया होगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आर. लेकिन डियर एक्चुअल में वो एक्चुअल आवर वर्क फॉर है. योर एफिशिएंसी इज हाउ मच आवर्स यू हैव एक्चुअली वर्क इज योर एक्चुअल एफिशिएंसी. अब मैंने अगर आपको बोला है कि आपको दिन में 8 घंटे पढ़ाई करनी है, एग्जाम के दिन कम है, तो अब अभी तो आपकी स्टडी एक दिन में 10 घंटा होनी चाहिए. 10 आवर्स यू हैव टू मेंटेन योर शेड्यूल. 10 10 आवर्स नाउ यू शुड डू योर स्टडीज. और ये 15th के बाद एटलीस्ट यही 10 घंटे की जगह 10 घंटे का स्टडी जो है आपका, ये कम से कम आपका 12 to 13 आवर्स हो जाना चाहिए. लेकिन अब आप, मैंने बोला कि आपको 10 आवर्स स्टडी करना चाहिए, लेकिन आप 10 आवर्स डिवोट जरूर कर रहे हो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसमें से 2 आवर्स आप बेसिकली यूटिलाइज कर रहे हो फॉर टी स्नैक लंच ऑल दोज थिंग्स. So you're utilizing 2 hours for that tea, snack, lunch, dinner
फॉर ऑल अदर एक्टिविटीज। सो मैंने तो बोला 10 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन 10 घंटे में से आप प्रोडक्टिवली तो 8 घंटे ही पढ़ रहे हो ना। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्चुअल और वर्क फॉर, फॉर्मूला ये नहीं बोलता है कि 10 घंटे से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला बोलता है आपने एक्चुअल में पढ़ाई कितने घंटे की है, 10 घंटे में से 8 घंटे की है ना। तो एक्चुअल आर वर्क फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, सॉरी, एक्चुअल आर वर्क फॉर 8 आवर्स हो जाएगा आपका। और जो 2 घंटे आपने पढ़ाई नहीं की वो आपका आइडल टाइम वेरिएंस हो जाएगा। क्या होगा, आइडल टाइम वेरिएंस, राइट। सो here it is, standard hours minus actual or hours work for, it should be multiplied by always standard, multiply by standard rate गिरेगा। क्यों स्टैंडर्ड, वेन एवर यू आर कंपेयरिंग विद आवर्स, आवर्स के लिए जिम्मेदार का ना प्रोडक्शन मैनेजर, आवर्स के लिए प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। लेबर ने अगर कम आवर्स काम किया एक्चुअल में तो अपना तो लॉस है, हाँ उसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार है। लेकिन रेट के लिए प्रोडक्शन मैनेजर नहीं जिम्मेदार है ना, रेट के लिए प्राइस मैनेजर जिम्मेदार है, रेट मैनेजर जिम्मेदार है। उसका आर्ग्यूमेंट आप रेट मैनेजर को करो ना, प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा उसकी जिम्मेदारी मैं थोड़ी लूंगा, इसलिए फॉर्मूला बोलता है मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। सो लॉजिक तो सेम ही है ना, वेन एवर वी आर कंपेयरिंग विद आवर्स, what whenever we are comparing with ours, sir, multiply by standard rate, never multiply by actual rate, simple logic। मैं लिखता हूँ, प्रोडक्शन मैनेजर is responsible for hours and not for rates। Production manager is responsible for hours and not for rates। 2 घंटे पढ़ाई नहीं की ना हमने, 10 घंटे का मैंने शेड्यूल बोला था। तो 2 घंटे जो पढ़ाई नहीं की वो कौन से आवर्स है, वो आइडल आर वेरिएंस है। क्या है वो, आइडल आर वेरिएंस। अब 2 घंटे पढ़ाई नहीं की तो नुकसान ही हुआ ना अपना तो, 2 घंटे पढ़ाई नहीं की तो नुकसान ही हुआ। तो इसका मतलब आप ये समझो कि आइडल आर वेरिएंस हमेशा एडवर्स ही होता था, वो कभी फेवरेबल हो ही नहीं सकता। कैसे फेवरेबल होगा, आइडल आर मतलब उतना टाइम वेस्ट किया लेबर ने, तो फैक्ट्री के ओनर का तो लॉस ही है ना, नुकसान ही है ना। सो आइडल आर वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स। सो व्हाट शुड बी फॉर्मूला फॉर आइडल आर वेरिएंस, अगर एग्जाम में आ गया तो आइडल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये आपका फॉर्मूला हो गया। थर्ड इज लेबर रेट वेरिएंस। सर फॉर्मूला क्या होगा लेबर रेट वेरिएंस का, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल रेट से माइनस करो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। हाँ, यहाँ पे एक्चुअल आवर मतलब टोटल आवर्स होंगे। व्हाट शुड बी योर टोटल आवर्स, टोटल आवर्स इज 10 आवर्स। मैंने बोला था 10 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, आपने 8 घंटे एक्चुअल में पढ़ाई की है, 2 घंटे आपके आइडल आवर हुए, लेकिन लेबर रेट वेरिएंस पे आपको पूरे 10 घंटे ही लेने हैं, 10 आवर्स ही लेना है टोटल आवर्स। क्यों, क्या लॉजिक क्या है, सर वी आर स्पीकिंग अबाउट रेट, वी आर स्पीकिंग अबाउट रेट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट, परचेस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट, he is not responsible for hours, प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर। इसलिए परचेज मैनेजर बोलता है मैं स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल रेट से माइनस करूंगा, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन अगर एक्चुअल आवर ज्यादा लग गए तो मैं थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूं। उसका आर्ग्यूमेंट आप प्रोडक्शन मैनेजर से कीजिए ना। तो इसलिए फॉर्मूला वेन एवर वी आर कंपेयरिंग विद द रेट, वेन एवर वी आर कंपेयरिंग विद द रेट ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर, सेम लॉजिक यूज होगा। क्यों ये लॉजिक यूज हुआ, चलो ये भी नोट लिखता हूँ। रेट मैनेजर is responsible for rate variance।
and not for hours. क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चलो, तो ये फॉर्मूलेज है। हाँ, अब सर जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है वो भी तो आपने फर्दर डिवाइड किया। यस किया था, चलो कर देते हैं। लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस ना। यहाँ पे क्या किया था सर हमने? लेबर मिक्स वेरिएंस, सेम फॉर्मूला जो आपने मटेरियल में यूज किया था वही सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे भी वही सेम एप्लीकेशन ही यूज करें। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेबर मिक्स वेरिएंस? फॉर्मूला इज रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। whenever you are comparing with the hours Whenever you are comparing with the hours, it should always be multiplied by standard rate. That's a logic. And finally, labor yield variance. Labor yield variance. So what is the formula for yield variance? Standard total hours. We are speaking about total hours. Standard total hours minus actual total hours. When you are speaking with respect to total hour, it cannot be multiplied by standard rate. We have to use standard weighted rate. Sir, you are comparing with hours, but those hours are total hours. आप hours को कंपेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर, आप hours को कंपेयर कर रहे हो, लेकिन वो टोटल hours की बात कर रहे हो ना। आप स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, आप अलग अलग लेबर की बात नहीं कर रहे हो, आप टोटल लेबर आवर्स की बात कर रहे हो। तो मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट तो नहीं हो सकता ना। आपको मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड वेटेड रेट ही करना पड़ेगा ना सर। भी तो आंसर आएगा। क्लियर? तो ये अपना लॉजिक एकदम क्लियर है। अब मैं वेरिफिकेशन भी आपको लिख के देता हूँ, चलो। व्हाट शुड बी द वेरिफिकेशन? लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस, आइडल आर वेरिएंस, ये भी तो आएगा। इफ आइडल आर इज देयर, ये भी ऐड करोगे, प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट? देन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को आपने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर yield variance. Clear? These are the two form verifications we need to do. अब आगे बढ़ते हैं now. So this is regarding material and labor, and everyone, this will also be helpful in your पेपर नंबर 8 कॉस्टिंग। ठीक है? तो ये दो चीजें आपकी रिवाइज हो रही है, एक पेपर नंबर 8 भी रिवाइज हो रहा है और एक पेपर नंबर 12 भी रिवाइज हो रहा है आपका, दोनों चीजें एक साथ चल रही है। ठीक है ना? चलो अब आगे बढ़ता हूँ। अब आगे अगर बढ़ो तो पहले सेल्स वेरिएंस कवर कर देता हूँ। सेल्स वेरिएंस तो बहुत ही इजी था, इफ यू रिमेम्बर। विल कवर अप सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस, इफ यू रिमेम्बर सेल्स वेरिएंस में हमने स्टैंडर्ड की जगह पे वर्ड बजट यूज किया था। दैट इज द ओनली डिफरेंस, इफ यू रिमेम्बर डियर, राइट? स्टैंडर्ड की जगह पे सिर्फ वर्ड आपने बजट यूज किया था सेल्स वेरिएंस में। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, चलो। पहला फॉर्म सेल्स वैल्यू वेरिएंस।
फॉर्मूला, बजटेड सेल्स वैल्यू माइनस एक्चुअल सेल्स वैल्यू, बजटेड सेल्स वैल्यू माइनस एक्चुअल सेल्स वैल्यू। यहाँ पे आपका एनालिसिस वाइसा वर्सा होगा। सर वाइसा वर्सा क्यों होगा? देखो, लॉजिक लगाओ, आप सिंपल लॉजिक लगाओ, आपको रट्टा कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ लॉजिक के ऊपर काम कर। सर अगर बजटेड सेल्स से एक्चुअल सेल ज्यादा हो जाए, बजटेड सेल से एक्चुअल सेल ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना सर। आपका सेल्स बढ़ रहा है, एक्चुअल सेल बढ़ रहा है, आपने सोचा था आप 5 लाख का सेल्स करोगे, लेकिन आपने 5 लाख की जगह पे तो 5,50,000 का एक्चुअल सेल दिया। सर 5,50,000 का सेल्स किया मतलब 50,000 सेल्स बढ़ गया। 50,000 सेल्स बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा ना, कम थोड़ी हुआ। तो बजटेड सेल्स वैल्यू से अगर एक्चुअल सेल्स वैल्यू ज्यादा होता है तो फेवरेबल होता है, और अगर बजटेड सेल्स वैल्यू से एक्चुअल सेल वैल्यू कम हो जाए तो क्या एडवांस नहीं होगा? राइट। सर सेल्स वैल्यू का प्रॉफिट मार्जिन बनने के पीछे दो रीजन है, एक है क्वांटिटी और एक है प्राइस। एक है क्वांटिटी और एक है प्राइस। सो सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस एक फॉर्मूला बनता था, सेल्स प्राइस वेरिएंस एक फॉर्मूला बनता था। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस। सर व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी? वी राइट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड को रिप्लेस बाय बजट करो, बस इतना ही करना है आपको, और क्या करना है? बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी multiply by budgeted price. Logic? Whenever we are comparing with a quantity, always multiply by budgeted price. Because same logic. Production manager is responsible for quantity. He is not responsible for price variance. So formula क्या बना? Formula बना budgeted quantity minus actual quantity into budgeted price. That's it. Sir, whenever you are comparing with the quantity, always multiply by budgeted price. Right? I will give note for this also. No. Production manager. यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर नहीं आएगा, सेल्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वांटिटी। प्राइस के लिए प्राइस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। देर आर टू मैनेजर, सेल्स मैनेजर एंड प्राइस मैनेजर। नाउ सेल्स प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, you are comparing price with price. So budgeted price minus actual price, but it should be multiplied by actual quantity sold. Budgeted price minus actual price into actual quantity sold. Whenever you are comparing with the price, always multiply by actual quantity sold. Always multiply by actual quantity sold, right? Because price manager is responsible for rate or price, but not for quantity. I'm like reading that. Price manager is responsible for price and not for quantity. That's it. Simple logic. लॉजिक क्लियर हो रहा है ना एवरीवन, फॉर्मूले का? फिर सर आप क्वांटिटी क्या करोगे? क्वांटिटी वेरिएंस, जैसे आपने मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को कैसे डिवाइड किया था?
अब सेम सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. सेल्स मिक्स वेरिएंस, सेल्स सब यूसेज वेरिएंस. सेल्स मिक्स, सर फॉर्मूला क्या बनेगा? रिवाइज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मत बोलो, बजट बोलो. रिवाइज बजटेड मिक्स quantity minus actual quantity into budgeted price. Revised standard. Revised budgeted mixed quantity minus actual quantity into budgeted price will be the formula. Same logic. Sales sub usage variance. Budgeted total input minus actual total input. Budgeted total input minus actual total input into budgeted weighted. Weighted rate बोलो या weighted price बोलो. Budgeted weighted price. Clear? These are the five formulas we have in case of sales variance. And now finally, sales price variance, sales margin variance. I will write verification. क्या है verification? Sales value variance is equal to sales quantity variance plus sales price variance. Second, sales quantity variance equal to sales mix variance plus sales sub usage variance. These are the two verifications. Now, अब चले सेल्स प्राइस वेरिएंस में, मतलब प्रॉफिट वेरिएंस. मार्जिन वेरिएंस ऐसा बोलो. मार्जिन मींस प्रॉफिट वेरिएंस. चलो यहाँ पे आपने पहला फॉर्मूला क्या कवर किया था? सेल्स मार्जिन वेरिएंस. सर सेल्स मार्जिन वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? बजटेड मार्जिन, बजटेड सेल्स मार्जिन माइनस एक्चुअल सेल्स मार्जिन. बजटेड सेल्स मार्जिन माइनस एक्चुअल सेल्स मार्जिन. नेक्स्ट, सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस. सेम फॉर्मूला दिया.
budgeted quantity minus actual quantity into budgeted margin price into budgeted margin price. Whenever we are comparing with a quantity, always multiply by budgeted price. Second, sales margin price variance or rate variance. Formula: budgeted rates minus actual rates into rate मत बोलो यहाँ पे, margin बोलो. Budgeted margin minus actual margin into actual quantity sold. Budgeted margin minus actual margin into actual quantity sold. Next. चलो मार्जिन वेरिएंस को बाइफरकेट करते हैं. चलो क्वांटिटी को डिवाइड करें. सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस. सेल्स मार्जिन सब यूसेज वेरिएंस. डियर यहाँ पे क्वांटिटी और वॉल्यूम इज वन एंड दी सेम. सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वॉल्यूम इज वन एंड दी सेम. सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस. सर फॉर्मूला क्या बनेगा सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस का? रिवाइज बजटेड मिक्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी into budgeted margin price. That's your formula. Revise budgeted mixed quantity minus actual quantity into budgeted margin price. Now, next. Sales margin sub usage variance. Just wait right here. सेल्स मार्जिन सब यूसेज वेरिएंस. सर क्या फॉर्मूला होना चाहिए? बजटेड टोटल क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल टोटल क्वांटिटी सोल्ड. अब टोटल की बात कर रहे हैं तो इनटू वेटेड बजटेड रेट प्राइस. वेटेड budgeted margin price. That's it. This should be your formula. I will give you verification also. Okay, what is a verification? Sales margin variance equal to sales margin quantity variance plus sales margin price variance या rate variance. Sales margin quantity variance is equal to sales margin mix variance
plus sales margins sub usage variance should be your verification. क्लियर? ये हो गया हमारा सेल्स वेरिएंस, ये हो गया हमारा सेल्स मार्जिन वेरिएंस, मार्जिन वेरिएंस भी हो गया। क्या बचा? वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, और एक बचा आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। नाउ नॉट वेरिएबल ओवरहेड इज एक्सट्रीमली वेरी इजी, राइट? वेरिएबल ओवरहेड, चलो now मैं आपको वेरिएबल पे लेके जाता हूँ। हाँ, मुझे या चलो पहले वेरिएबल पे लेके जाओ। वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंस, variable overhead variance. First, variable overhead cost variance. Variable overhead cost variance. What should be the formula for variable overhead cost variance? Standard cost minus actual cost. Then variable overheads expenditure variance. And variable overhead efficiency variance. Variable overhead expenditure variance. So what is the formula for variable overhead expenditure variance? Expenditure formula is standard rate minus actual rate into actual hours. Formula is exactly same what you use in labor variance. Labor variance का formula and variable overhead variance का formula more or less same ही है. Variable overhead expenditure, expenditure variance का formula है standard rate minus actual rate into actual hour. Then variable overhead efficiency. Here जब मैं efficiency की बात करूंगा तो आप बोलोगे efficiency is always calculated in terms of hours. Efficiency is always calculated in terms of hours. Your formula is standard hours minus actual hours. Standard hours minus actual hours into standard rate. Standard hours minus actual hour into standard rate. Now this you have covered up. Basically, in here, can I say variable overhead variance? चलो अब चलते फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पे। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पे मैं आपको वेरिफिकेशन भी दे दूं। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड expenditure variance plus variable overhead efficiency variance. This is the verification. Only three formulas. Very important. Note material variance.
labor variance, variable overhead variance, sales variance. Sales variance is always calculated based on actual output or actual production. Always remember this point. Very, very important. Material variance, labor variance, variable overhead variance, sales variances. All these variances are always based upon actual output or actual production. Remember, but however, only fixed overhead are based upon budgeted output or budgeted production. Just wait, huh? Everybody. Okay, dear. It is based upon actual output or actual production. Remember this particular point. Now, however, what I want to tell you, fixed overhead, only and only fixed overheads are based upon budgeted output and budgeted production. It's very important. Huh? No, fixed overheads variance are based upon budgeted outputs or budgeted production. Are based upon budgeted output or budgeted production, everyone. Fine? Chalo. We are moving towards fixed overhead variance. Fixed overheads cost variance are performed. Fixed overhead cost variance. Formula is budgeted cost, recovered cost minus actual cost. Recovered cost minus actual cost will be your problem. Sir, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इंक्रीज होने के पीछे there are two manager responsible. One of the manager responsible is called expense manager and one of the manager is called production manager. For expense manager and production manager.
ओके, कॉस्ट बढ़ने के पीछे दो कारण थे। एक तो एक्सपेंस मैनेजर की वजह से कॉस्ट बढ़ा है, और दूसरा कॉस्ट जो बढ़ा है वो प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से बढ़ा है। चलो, एक्सपेंस मैनेजर से एक फॉर्मूला बनता है, फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फॉर्मूला क्या बनेगा? बजटेड कॉस्ट माइनस डिफरेंस बिटवीन बजटेड कॉस्ट विद योर एक्चुअल कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट will be the formula for fixed overhead expenditure variance. Production manager is responsible for number of units. I repeat, production manager is responsible for quantity fluctuation. So what should be my formula? Budgeted units minus actual unit. Compare units. Budgeted units minus actual units, which should be multiplied by recovery rate. RR, recovery rate. Okay. Now fixed overheads. Formula is fixed overhead volume variance. Huh? Budgeted units minus actual units into recovery rate. सर वॉल्यूम में फ्लक्चुएशन होने का क्या कारण था? हाँ, वॉल्यूम में फ्लक्चुएशन होने के दो कारण था, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। सर वॉल्यूम में वेरिएशन होने के दो कारण थे। देयर आर टू रीजन फॉर दैट, देयर आर टू फॉर्मूलेज। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। सर capacity will always be calculated. Capacity will always be calculated in terms of hours. Capacity will always be calculated in terms of hours. So what should be your formula? Compare hours with hours. Which are? Budgeted hours with your actual hours. Budgeted hours with your actual hours. Multiply by recovery rate. We have used this formula. Budgeted hours minus actual hours into recovery rate. Efficiency will always be all is also to be calculated in terms of hours. Standard hours, standard hours, budgeted hours for actual output. Budgeted hours for actual production minus actual hours into recovery rate. RR, budgeted hours for actual production minus actual hours into recovery rates will be your fixed overhead efficiency variance. नो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी में वेरिएशंस होने के, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी में वेरिएशंस होने के रीजंस क्या थे? फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी में वेरिएशंस होने के दो रीजन थे। There are two reasons. Which are the two reasons, sir? One of the reason is number of days. Number of days. Where you see your days? You see your days in calendar. That's why one of the formula is called fixed overhead calendar variance. Now, fixed overhead expenditure variance. Fixed overhead capacity variance. Capacity will always be calculated in terms of hours. So what should be?
sorry, fixed, sorry, dear, sorry, capacity, not capacity. Fixed overhead capacity पे variation होने का कारण है fixed overhead calendar variance. Calendar means number of days. Compare days, budgeted days minus actual days. Budgeted days minus actual days into RR, recovery rate. Recovery rate in days. Then fixed overhead, fixed overhead recovered variances. Revised capacity variance. Here revised capacity variance. फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बनाया था हमने. Standard hours in actual day. Standard hours in actual days. Formula banaya gaya hai. We have made this formula if you remember. Don't worry, we are going to solve a question based on this. Standard hours in actual days minus actual hours into RR recovery rate. Fixed overhead cost variance. Fixed overhead cost variance. Fixed overhead expenditure variance. Fixed overhead volume variance. Okay, fixed overhead cost equal to fixed overhead expenditure plus fixed overhead volume variance. Second verification, fixed overhead volume variance. Fixed overhead capacity, fixed overhead efficiency. Then fixed overhead capacity variance. Fixed overhead calendar variance. Fixed overhead capacity variance equal to fixed overhead calendar variance plus fixed overheads revised. Fixed overhead revised capacity variance. Capacity variance. These are the verifications which we have done. So these are all the formulas totally we have seen in standard costing, right? So all the formulas dear, I have revised you at once. We have gone through all the formulas. Chalo, don't worry about that. Coming towards the next part, which is called budgetary control. Dear, don't write anything. I'm going to forward. I will forward you in group. Just pay attention and revise all the things properly. Next, shall I proceed with budgetary control? Tell me everyone. No response. Please give me a response, dear. Yeah, Ajay. Budgetary control. Okay, fine. What we have covered in budgetary control. Sir, see, in budgetary control, we have covered various type of budget. Which are the budgets we have covered? I will tell you that first.
Very first, we have cover up. Can I say that? Flexible budget. Very important. In exam, normally they ask flexible budget, right? Then we have cover up. Production budget. We have also covered purchase budget. Is it? We have covered cash budget. We have covered sales budget. Cost budget also we have covered. Sales budget. Finally, these are the budgets we have covered. Right? So we have covered up these things. Flexible budget, production budget, purchase budget, cash budget, cost budget, and last my have written sales budget. In flexible budget, different processing activities covered. 50% level, 100% level, 60% level, we have covered that. And we have split that into two parts, fixed cost and variable cost. If semi-variable cost is there, we have split into fixed and variable. How we have split into fixed and variable? For variable, we have used a formula if you remember, difference in cost divided by difference in production. Difference in cost divided by difference in production. We get variable per unit. Then how we calculate fixed cost? Total cost minus variable cost. From total cost, when we deduct fixed cost. Total cost when we deduct variable cost, balancing figure we get. Can I say fixed cost? Okay. No. In production budget, simple. What is the formula for production? Quantity sold plus
find everyone. So how we calculate production budget? Quantity sold plus closing stock of finished goods, huh? Minus opening stock of finished goods. Simply we get is it production. Coming towards purchase budget. Purchase. Formula is raw material consumed. मैं ऐड करूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिडक्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल so it's your purchase. Clear? Raw material consumed plus closing stock of raw material minus opening stock of raw material, you get your purchases. Cash budget. Opening cash plus we have receipt minus we have payment. We get closing cash. Sometime we have minimum cash. So investment, loans, then we have got minimum balance. Like this, we have prepared our cash budget, right? Then cost budget. Cost budget we have prepared basically for a cost. So it is material, labor, overheads will give you cost budget. Sales budget. We have prepared sales budget based on area, if you remember, or location, based on quantity, based on area, location, based on quantity, you prepare your sales budget. Okay. Then, so these are the things we have covered up, right? In case of cost budget, important word. In case of cost budget, if labor efficiency is increased, cost will reduce. Cost will reduce. And if labor efficiency is reduced, cost will increase. So we have seen that problem. Labor efficiency is reduced, cost will increase. Labor efficiency will increase, cost will reduce. Okay? No. These are the things we have seen. Now, so this is with respect to budgetary control. We have seen all these categories of
problems in case of budgetary control. Okay. At least there will be a single question of budgetary control. Okay. Now, next to that, so these three topics are A category. We have to focus on these three categories first, which I have revised you: marginal, standard, and budgetary control. Now, coming towards activity-based costing. What we have learned in activity-based costing. See, important points to be remembered. What are the important points to be remembered in case of activity-based costing? Point number one. We had to sheet or cost statement using traditional method of costing. Using traditional method of costing. That is using absorption costing. Then we compare total cost of absorption costing with activity based costing. Now, steps used in activity based costing. Steps used in activity based costing. Which are these steps? Step number one, find out cost driver rate. How we find out cost driver rate? Associated cost divided by number of drivers. Associated cost divided by number of drivers. Step number two. Based on these driver rates, calculate total cost using activity based costing. Step number three, what we have done, compare manufacturing cost of absorption costing .
with activity based costing. And analyze overprice or underprice of product. Analyze overprice and underprice of product. Right? Step number step number five. Activity, or I may simply say activities and drivers. First activity, machine oriented activity. Which are the activities we have seen in this chapter? Machine oriented activity. First, we have seen machine oriented activity. Is it driver uses number of machine hours? Driver uses number of machine hours. Second activity which we have seen is material ordering activity. Material ordering activity. Driver is number of orders. Right. Number of orders. Third activity is setup activity. Driver uses number of setup. Fourth is material handling activity. And we have seen number of driver is a driver. Number of time material is handled. Spare part activity. Admin overhead activity. Number of spare parts. Number of spare parts. So normally these are the activities we have seen. Some of the activity which we have seen is these activities in this particular chapter, right? So we have calculated manufacturing cost using absorption costing. Then we have
calculated manufacturing cost also by using activity based costing. But while using activity based costing, step number one, we have calculated cost driver rate, that is associated cost divided by number of driver. And after calculating a cost driver rate, we have done a calculation of what manufacturing cost using ABC activity, and then we have done a comparison by using both absorption costing and ABC costing, and then we have given analysis which product is overpriced and underpriced. That's what we have done in activity based costing. Okay, next is we have now divisional performance, what we have covered. Divisional performance. Now, under divisional performance, we have covered basically DuPont analysis, return on investment. Return on investment. Then we have covered up residual income. Okay, return on investment, residual income, and we have also covered up in this, which is economic value add. EVA. And you have learned learning curve. Learning curve you have learned. These are the things you have taught, right? So in divisional performance, these are the things to be we have covered up. That is, first is DuPont analysis, return on investment, residual income. Then we have EVA and learning curve. Okay. In DuPont analysis, what you have learned? If you remember, we have learned net profit ratio, asset turnover ratio, and leverage, financial leverage. Leverage we have learned. Okay. Now, in net profit ratio, you have learned a formula net profit divided by net sales. In asset turnover ratio, formula uses turnover or net sales divided by total assets. And in leverage, you use a formula total assets divided by shareholders' funds. This is a combination of formula which you use in case of do product analysis. And if we see that the final formula is what? Net profit divided by shareholders' funds. Okay, now return on capital employed. What is the formula you have used?
Formula used in return on investment is EBIT divided by capital employed into or investment into 100. EBIT divided by capital employed into 100. Residual income. Your formula uses divisional profit minus actual profit. EVA formula uses this formula you have used regional profit minus divisional investment capital charge. EVA formula is no PAT capital employed into WSCC. That's a formula you have used. And learning curve, you have used that practical concept. I suppose in learning curve, you have used a formula y equal to AXB. Fine. This is the formula. Basically, we use the divisional performance. Okay. DM. And with respect to responsibility accounting. With respect to responsibility accounting, we have done only three numericals that you have to see from the module itself. Huh? What we have learned, we have solved three questions from divisional performance. So this is the overall management accounting I've given you here, right? Which we have seen. Now, definitely, now we'll see little bit of problem based, little bit of problem we will see. I suppose see in your group, you have been forwarded management accounting paper. Yeah. Fine here. So I've given you overall review about management accounting. Now we'll see some of the question based on management accounting. Little bit of problem based on each and every chapter. Let's see. Question number one. Now let's see first question. Shall we proceed, everyone?
Sturdy Horse Limited, a cycle manufacturing company, has drawn up a program for the manufacture of a new product for the envisage. The manufacturer of baby tricycle fitted with a bell. The company estimates sales of tricycle of 10,000 during the first year. In the first year, we are expecting what deal? In the first year, we are expecting the company estimate the sales of tricycle of 10,000 during the first year and expect that from the second year onwards, the sales estimate will stabilize to 20,000 tricycles. Since the company has no provision for the manufacture of a small bell, specially required for the tricycle, the requirement of the bell is initially proposed to be met by purchase from the open market at 8 each. At present, what we are doing? At present, we are purchasing from the open market, and what at what rate we are buying? We are buying at 8 rupees each. Okay. So first year, I am a manufacturer of bell and I'm a manufacturer of bicycle. In that bicycle, I need to fit a bell. For that bell, I'm thinking that that bell is available from the supplier at a rate of 8 rupees each. So I'm at present buying from the supplier at 8 rupees each. But now I'm thinking that I should manufacture my own bell. So in the first year, I'm expecting that I will manufacture 10,000 bell. And from second year onwards, I'm expecting I will manufacture 20,000 bell. Okay. See, however, if the company desire to manufacture the bell in its factory by installations of new equipment, it has two proposal as under. So if company manufacture this bell, it has two different proposal. What is a two different proposal? सबसे पहला प्रपोजल ये है कि अगर कंपनी खुद के बेल को मैन्युफैक्चर करना चाहती है तो कंपनी सुपर एक्स मशीन खरीद ले मार्केट से इंस्टॉल कर ले या तो जनता मशीन इंस्टॉल करे either the company should buy super x machine or the company should buy janta machine. Suppose if the company proposed to buy super x machine, then what is the cost available is? Cost available is 3 lakhs and 2 lakhs. Estimated life of both the bicycle bicycle is well is machine is sorry 10 years. Fixed overhead other than depreciation on machine. Okay, this is my fixed overheads other than depreciation. 54 and 28. Variable expense per well. This is somewhat printing error. Don't worry about it. So I'm just cut. I'm mistaken. It's so fixed overhead is 54,000 and 28,000 other than depreciation of machinery. Then we have variable expense, which is 4 and 5. Okay. Now, depreciation on machinery should be charged on straight line basis. Required. For each of the two level of output, namely 10,000 and 20,000 bell, state with suitable working, whether the company should purchase the bell from the market or equipment install equipment for manufacture of bell. If your decision is in favor of installation of new equipment, if you want to install new equipment, which of the two machine would you install? See, first you need to decide at 10,000 and 20,000 bell, which machine should be installed. Okay. Which machine is to be installed? You need to decide if you manufacture 10,000 and 20,000 bell. Now, in second case, your decision change. What would be your decision in case of forecast of requirement from second year onwards is estimated to be 20,000 bell instead of 20,000 bell. So in second year, normally we produce 20,000 bell. We want to produce 20,000 bell. Doesn't produce 20,000 bell in second year. Instead of 20,000, we'll produce 40,000 bell. अगर हम second year में 20,000 bell ना बना के 40,000 bell manufacture करें, तो क्या हमारा decision vary हो सकता है? ये हमें बताना है. At what volume of bell will the installation of two machine break even? Okay, it means there are how many part? There are 3. ठीक है सर. इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है. सर पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट वो बोल रहा है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में 10,000 बेल मैन्युफैक्चर करते हो तो आपका डिसीजन क्या हो? क्या आप मार्केट से बाय करोगे या मशीन परचेज करोगे? हाँ, फिर आपको ये भी देखना है कि अगर आप मशीन परचेज करते हो तो सुपर एक्स और जनता में से कोई एक मशीन आपको परचेज करनी पड़ेगी, तो विच मशीन विल यू बाय? सेम कैलकुलेशन कि आपको 20,000 बेल के लिए भी करना है, मार्केट से खरीदोगे या मैन्युफैक्चरिंग करोगे, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो फिर कौन सी मशीन मैन्युफैक्चर कौन सी मशीन से आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे ये आपको डिसाइड करना है. फाइंड ईयर. नाउ अगर आप सेकेंड पॉइंट में 20,000 बेल ना बना के कितने बेल मैन्युफैक्चर करो?
कहने से अगर आप प्रोड्यूस करो 20,000 पे, तो क्या आपका डिसीजन वेरी होगा? चेक करेंगे। थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया, एट व्हाट वॉल्यूम ऑफ बेल विल इंस्टॉलेशन ऑफ टू मशीन ब्रेक इवन? कितने वॉल्यूम पे, कितने वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे आपका डिसीजन इनडिफरेंस होगा? आपका डिसीजन इनडिफरेंस होगा मतलब, या तो अब सुपर एक्स बाय करो या जनता बाय करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों का कॉस्ट आपके लिए सेम ही होगा। दोनों का कॉस्ट जो सेम होगा, वो मेरे लिए होगा ब्रेक इवन पॉइंट। At what break even point cost of super X machine and जनता machine will be the same for me? तो कितने वॉल्यूम पे दोनों का कॉस्ट, सुपर एक्स एंड जनता मशीन का कॉस्ट क्या होगा? सेम होगा। वो वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है पॉइंट नंबर सी में। इज इट क्लियर? दिस प्रॉब्लम इज नथिंग बट मेक वर्सेस बाय, मेक वर्सेस बाय, whether you make the product or whether you buy from the market. Okay, now चलो let's see. Answer number one, computation of manufacturing a product versus buying. CDM, first point. पहले चेक करते व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सी यू आर गोइंग टू बाय द मशीन, यू आर गोइंग टू बाय द मशीन, सो इफ यू बाय द मशीन, जय पहले आप 10,000 यूनिट पे कैलकुलेट करोगे, फिर 20 पे करोगे, फिर 40 पे भी करोगे। गेटिंग ना? पहले पॉइंट नंबर ए में वी विल डू कैलकुलेशन ऑन 10 एज वेल एज 20,000। ओके, फिर पॉइंट नंबर बी में ना हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 40,000 यूनिट पे। चलो ना, अगर 10,000 यूनिट बनाते हैं तो सिचुएशन क्या है? भाई देखो, आप या तो सुपर एक्स बाय करोगे या जनता मशीन, तो बाय करनी है। मशीन बाय करोगे तो आपको कॉस्ट तो इनकर्ड करना पड़ेगा ना, बेयर तो करना पड़ेगा ना, विच इज नथिंग बट विच इज डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन? इज इट 3 lakhs? Estimated life is 10 years. आई एम कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर यूनिट डियर, सो डेफिनेटली जो भी डेप्रिसिएशन आएगा इट शुड बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बेल्स। इज इट 10,000 यूनिट्स? सेकेंड मशीन का कॉस्ट 2 लाख था मेरे ख्याल से, डिवाइडेड बाय 10 into 1 divided by production 10,000। Check. It will be 3 per unit, it will be 2 per unit. Chalo, next cost is fixed cost per unit. Fixed cost you will incur is 54,000 divided by 10,000. So is it 5.4? Second machine का fixed cost जो है 28,000 है, divided by 10,000. Cost incurred is 2.8.
Then we have variable cost. How much variable we will incur? 4 rupee and 5 rupee. Na? So how much total cost we will incur on these machinery? This will be cost of manufacturing. Cost of manufacturing. Okay. Now your cost of manufacturing is 12.4 and here it is 9.8. Cost of buying. सप्लायर कितने में दे रहा है? 8 रुपीज में. 8 रुपीज में. डियर ये सारे खर्चे आप बोलोगे फिक्स कॉस्ट क्यों कंसीडर किया सर आपने? फिक्स कॉस्ट इरेलीवेंट है, आपके दिमाग में डाउट आता होगा. लेकिन रिमेंबर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट रिलेटेड विद पर्टिकुलर मशीनरी है. रिलेटेड विद मशीनरी है. और आप मशीनरी खरीदने जा रहे हो इस क्वेश्चन में. यू आर गोइंग टू बाय मशीनरी. So when you will buy machinery, how much total cost you will incur on that machinery will be added. So your total manufacturing cost 12.8 and 9.8. But cost of buying market में तो अवेलेबल 8 रुपए पे. क्या डिसीजन होना चाहिए बोलो? ये केस में क्या करें हम? Yes, we should buy from the market, right? Cost of buying is less than cost of manufacturing, my dear. Therefore, it is advisable to buy the well. Right. First case, right? Same calculation for 20,000 units. Depreciation 3 lakhs divided by 10. But here your production is 20,000. So here it will become 1.5. Cost is 2 lakh है ना. Second machine का cost 2 lakh है. Divided by estimated life 10 years है. 1 by 20,000 production. ठीक है ना. तो ये 1 आ गया. Clear? चलो. Fixed cost 54,000 इनकर करोगे. Which should be divided by आपका production 20,000 है ना यहाँ पे. 2.7 and 1.4. Then you have variable cost. प्रोडक्शन बढ़ाओ या कम करो, वेरिएबल विल रिमेन सेम. चेक योर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. देखो यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना हो गया रिया? 3, 7, 8.20, 7.40. कॉस्ट ऑफ बाई 8 रुपीज and 8 rupees.
सो एटलीस्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, बराबर है, एग्जैक्टली करेक्ट। जनता मशीन बाय करूंगा, क्योंकि जनता मशीन अगर बाय करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग को 7.440 है, और मार्केट में बेल अवेलेबल है 8 रुपीज में, तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जनता मशीन में कम इनकर हो रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं 20,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करता हूँ बेल के, तो एडवाइजेबल है कि मुझे जनता मशीन ही बाय करनी चाहिए, राइट। 10,000 यूनिट पे यू शुड बाय फ्रॉम दी सप्लायर, 20,000 यूनिट पे यू बाय फ्रॉम जनता मशीन। कंक्लूजन, cost of buying is less than cost of manufacture is lesser in case of Janata machine. Therefore, it is advisable to buy Janata machine. To buy Janata machine. Clear? Now, third, or I will write this as B part. If we produce, instead of 20, if we produce 40,000 mil right now, number of bells कितने आपके पास? 40,000. 'Again, depreciation. Cost आपका 3 lakh रहेगा, divided by 10. But now your production is 40,000. 0.75. Here it is 2 lakhs divided by 10 into 1 by 40,000. 0.5. Right? No, fixed cost. 54,000 should be divided by 40,000. 1.35. 28,000 divided by 40,000. 0.70. Variable cost. 6.10. 6.20. Sure. Just drop down. Mine is 8 rupees. 8 rupees. What should be your decision, dear? In this case, to make जय में दोनों मशीन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो कम ही है, देख लो। दोनों मशीन का मैन्युफैक्चरिंग को, हाँ, टू मेक, लेकिन आप मेक भी करना है तो कौन सी मशीन बाय करो वो भी तो बताओ। योर आंसर इज राइट, टू मेक, बट विच मशीन टू बी बाय?
वेरी गुड, सुपर एक्स मशीन दैट आई नीड। तो 20,000 पे अवर डिसीजन इज जनता, देखो 40,000 पे डिसीजन चेंज हो गया, 40,000 पे डिसीजन क्या आया, सुपर एक्स मशीन बाय करोगे कि नहीं? क्लियर। थर्ड पॉइंट, उसने क्या पूछा था, एट व्हाट वॉल्यूम ऑफ बेल कॉस्ट ऑफ सुपर एक्स एंड जनता विल बी इंडिफरेंस, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का मतलब ये हो गया एट व्हाट वॉल्यूम इंस्टॉलेशन ऑफ बोथ द मशीन विल बी सेम फॉर अस। ओके, एट व्हाट वॉल्यूम, तो मुझे वॉल्यूम मालूम नहीं है, कितने वॉल्यूम पे दोनों मशीन का कॉस्ट मेरे लिए सेम होगा। आई रिपीट, कितने वॉल्यूम पे दोनों मशीन का कॉस्ट सेम होगा, मुझे पता नहीं है। तो वॉल्यूम मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, लेट वॉल्यूम बी एक्स। एट ब्रेक इवन पॉइंट कैन आई से कॉस्ट ऑफ बोथ द मशीन विल रिमेन व्हाट, सेम, है ना? कॉस्ट ऑफ बोथ द machine will remain what, same. In cost we have three expense here, we have depreciation, we have fixed cost, we have variable cost. If we add fixed depreciation, fixed cost plus variable cost, we will get total cost of super x machine. Similarly, we can calculate total cost of जनता machine also. And by the way, वेरिएबल का जो कॉस्ट होगा वो 4 and 5 पर यूनिट है, पर यूनिट, एंड पर यूनिट इज ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। योर वॉल्यूम इज एक्स, वॉल्यूम इज एक्स, या डियर। So definitely you will find the answer. Yeah, 3,000, 36,000, not 3,600. Yes, आपका आंसर एकदम राइट है। At what volume cost of both the machine will be equal for us is 36,000. Perfectly correct. चलो मैं ये सॉल्व करके दिखाऊं आपको। ठीक है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा, आई विल सॉल्व इट। ओके, देन थिंग विल गेट क्लेरिफाइड। सो एट व्हाट वॉल्यूम, लेट अस अज्यूम दैट वॉल्यूम बी एक्स। चलो, कॉस्ट ऑफ सुपर एक्स मशीन, कॉस्ट में क्या क्या था, डेप्रिसिएशन था कि नहीं, प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल, राइट ना डियर? अभी देखो यहाँ पे डेप्रीसिएशन 30,000 है, फिक्स कॉस्ट 54 है, प्लस वेरिएबल 4x है। दिस इज ओके।
At break-even point, cost of both the machine is same. So equation one is equal to two dot here. 84,000 plus 4x equal to 48,000 plus 5x. देखो अगर x को मैं वन साइड पे लेके आ जाऊं तो 5x माइनस 4x होगा एंड 84,000 माइनस 48 तो x आपको 36,000 36,000 cost of both the machine will be at indifference point. Getting everyone? Indifference point means it will remain same. अब what analysis we can do? चलो अब मैं प्रेजेंटेशन कैसे करूँ मैनेजमेंट के सामने रिपोर्ट कैसे सबमिट करूँ एनालिसिस नंबर ऑफ बिल्स and my decision. See, first case the number of bill. If it is 20,000 bill, which machine you will buy? हाँ ऐसे भी मिल सकता है ओके मिल सकता है यू कैन डू योर वर्किंग ऑल्सो इन दैट केस इन दैट वे ऑल्सो अगर 20,000 मशीन आप बाय कर रहे हो तो आपका डिसीजन क्या था बोलो पॉइंट नंबर वन का सेकंड पार्ट 20,000 बिल पे हमारा डिसीजन क्या था जनता मशीन ना डीएल 40,000 यूनिट पे अपना डिसीजन क्या है 40,000 यूनिट भी हमने कैलकुलेट किया था सुपर एक्स ना वेरी गुड है ना और ये दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस आता है 36,000 में आई विल राइट पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस राइट जनता बाय करो या सुपर एक्स बाय करो कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस्ट फॉर बोथ द मशीन विल रिमेन सेम क्लियर एवरीवन इज इट क्लियर एवरीवन ये जो सब हमने सॉल्व किया क्लियर हुआ मार्जिनल कॉस्टिंग में मेक वर्सेस बाय हाँ कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट ना नीलेश कॉस्ट 3 लाख था डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 10 years सिंपल ना फॉर्मूला स्क्रैप वैल्यू तो जीरो है क्लियर शैल आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन कॉपी करने में आप टाइम वेस्ट मत करो मेरा मानना ऐसा है मैं तो आपको पूरा पीडीएफ फॉरवर्ड कर ही दूंगा सो व्हाई शुड बी वेस्ट अवर टाइम ठीक है एवरीवन इज इट क्लियर दिस क्वेश्चन आगे बढ़े हम लोग चलो अब एक और मार्जिनल कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं आपके लिए चलो ये देखो मेक वर्सेस क्वेश्चन रेडियो
रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सेल वैल्यू लिमिटेड है, मतलब आप दोनों प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, दोनों में से एक प्रोडक्ट ही बेच सकते हो, तो डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जो प्रोडक्ट बेचने के बाद ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आएगा वो प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करो। ओके, इफ सेल्स वैल्यू इज लिमिटेड, डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड, जो आपका डाउट है ना यश, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास वैसा। चल, a radio manufacturing company find that while it cost is 6.25 each to make component X, कंपोनेंट का नाम है X2730। रेडियो मैन्यू फाइंड इट कॉस्ट, कंपनी अगर खुद मैन्युफैक्चर करती है ना तो 6.20 इज अ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा बोल रहा है। व्हाइल द सेम इज अवेलेबल इन द मार्केट 5.75, मार्केट में क्या भाव में अवेलेबल है, 5.75 में अवेलेबल है, विद एन एश्योरेंस ऑफ कंटिन्यू, ये रेट में अपन को माल मिलेगा ही मिलेगा। मटेरियल का कॉस्ट है 2.75, लेबर है 1.75, अदर वेरिएबल है 0.50, डेप्रिसिएशन एंड फिक्स कॉस्ट 1.25 एंड टोटल इज 6.25। एंड दिस टोटल 6.25 ये आपको पहली लाइन में दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग को 6.25। शुड यू मेक और बाय, आप मेक, विल यू मेक और विल यू बाय। मार्केट में क्या प्राइस पे अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है 5.75। व्हाट इज आवर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिख रहा है 6.25। क्या डिसीजन होना चाहिए, बाय कर ले, कितने में बाय करें, क्योंकि 5.75 पे, क्योंकि आपको ये नजर आ रहा है कॉस्ट ऑफ बाइंग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट। नो, योर आंसर इज रॉन्ग जय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैं बोल रहा हूं देखो यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6.25 नहीं है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज मटेरियल लेबर एंड वेरिएबल है, फिक्स कॉस्ट इज इरेलेवेंट इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं डेप्रिसिएशन एंड अदर फिक्स कॉस्ट नहीं कंसीडर करूंगा। अब आप बोलोगे सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने कंसीडर किया, अभी आप डिसीजन कैसे चेंज कर रहे हो, इस क्वेश्चन में आप डेप्रिसिएशन क्यों नहीं ले रहे हो। पहले वाला क्वेश्चन इज रिलेटेड विद परचेज ऑफ मशीनरी था, ये क्वेश्चन रिलेटेड विद परचेज ऑफ मशीनरी नहीं है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपकी मशीनरी फिट है आपकी फैक्ट्री के अंदर और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ऑलरेडी, यू आर नॉट गोइंग टू बाय न्यू मशीनरी। पहले वाले क्वेश्चन में नया मशीन बाय करना था मुझे, बाय करूंगा तो उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन एंड फिक्स कॉस्ट जो इनकर्ड हुआ वो ऐड करना पड़ेगा। अभी ये क्वेश्चन में कोई नया मशीन थोड़ी बाय कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो सिर्फ मेरे को बोल रहा है मेक वर्सेस बाय, मशीन तो अपनी ऑलरेडी पुरानी है, वो खरीदी हुई है, उससे प्रोडक्शन चल रहा है ना। जब उससे प्रोडक्शन चल रहा है तो अब मैं बेसिकली प्रोडक्शन करूं या ना करूं, मुझे डेप्रिसिएशन एंड अदर फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी इनकर करना है, तो वो तो इरेलीवेंट हो गया डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। तो रेलेवेंट क्या हुआ, रेलेवेंट मटेरियल लेबर एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट हुआ मेरे लिए। आप जरा मटेरियल लेबर और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल बताओ क्या आता है। 5 रुपये आ रहा है, सो इज इट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 5 रुपये। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बाइंग, बोलो, 5.7, बोलो डिसीजन बोलो। या वी शुड मैं सेकंड केस पूछ ही नहीं रहा हूं, मुझे सेकंड केस का आंसर क्यों दे रहे हो, मैंने जो पूछा वो आंसर दो मुझे। अभी एट प्रेजेंट क्या करेंगे, वी विल मेक द प्रोडक्ट, क्लियर ना एवरीवन। क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज 5 रुपये एंड कॉस्ट ऑफ बाइंग फ्रॉम द मार्केट इज 5.75, सो इट इज एडवाइजेबल एट प्रेजेंट कि वी शुड मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। ना अभी इन सेकेंड केस पे आता हूँ ना, मेरा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो 5 ही रहने वाला है, लेकिन अब कॉस्ट ऑफ बाइंग सेकेंड केस में कितना है, सप्लायर क्या रेट का ऑफर दे रहे हैं, देखो व्हाट वुड बी योर डिसीजन इफ द सप्लायर ऑफर कंपोनेंट एट 4.85। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे डियर अभी सेकंड केस में वी शुड बाय, बिकॉज कॉस्ट ऑफ बाइंग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, इज इट क्लियर ना। पहला वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, पहले वाले क्वेश्चन में मशीन बाय करना था इसलिए फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन और रिलेटेड विद फिक्स कॉस्ट ऑफ मशीनरी कंसिडर किया था, ये क्वेश्चन में नहीं करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन में मशीन ऑलरेडी फिटेड है अपना। चलो,
same computation of manufacturing versus buying. पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मटेरियल कॉस्ट 2.75 है. लेबर कॉस्ट 1.75 है. थर्ड इज अदर वेरिएबल. नो. यश, यहाँ पे आप मशीन खरीद नहीं रहे हो. सो डेप्रिसिएशन इरेलेवेंट हो गया. यू विल नॉट थिंक अबाउट डेप्रिसिएशन. क्योंकि आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ना करो, आपका मशीन आइडल भी है तो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक इन दैट मैनर. देखो, मैं पर ऑर्डर लू कस्टमर का या ना लू, देन ऑल्सो आई नीड टू चार्ज. अदर वेरिएबल. चलो, अदर वेरिएबल क्या है मेरे पास? 0.50. ठीक है ना. अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 5 आया था. कॉस्ट ऑफ बाइंग 5.75. डिसीजन. कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ बाइंग. Therefore, it is advisable to manufacture a product. Clear? To manufacture a product. चलो, अब मैं सेकेंड पार्ट पे चलूँ डियर. इफ सप्लायर ऑफर है, क्या रेट पे सप्लायर ऑफर दे रहा है? 4.85. Cost of manufacturing is how much? 5. Now, in this case,
cost of buying is less than the cost of manufacturing a product. Therefore, it is advisable to buy the product. Clear? To buy the product. Clear everyone? Very simple now. So ये अपना फाइनल आंसर आ गया ये केस में. या ये सब आते हैं जय. यस यस आते हैं. मेक वर्सेस बाय. देन लिमिटिंग फैक्टर आता है एग्जाम्स के अंदर डेफिनेटली. और ये इसका बेनिफिट क्या है? दिस ये जो क्वेश्चन वी हैव सॉल्व, दिस क्वेश्चन इज अराउंड 5 to 6 मार्क्स. लेकिन इसके पहले का जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है मेक वर्सेस बाय का, इट विल बी अराउंड 10 मार्क्स. और अभी जो सॉल्व करने जा रहा हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग, इट विल बी अराउंड 8 मार्क्स. एंड रिमेंबर दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम इन द एग्जामिनेशन. खाली फिगर थोड़ा चेंज करके आएगा, बाकी कोई वेरिएशंस नहीं होगा, मेथड तो सेम ही होगा. ये देखो ये रहा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. सी दैट following particular are taken from the record of a company engaged in manufacturing two product A and B from a certain material. Huh? So we are producing two product A and product B. Okay. Sales is 2,500 and 5,000. Material cost is 500 and 1,250. And material cost is rupees. Just wait. Right. So it is material is rupees 50 per kg. So in order to produce one per unit, in order to produce per unit, is it cost is 500 rupees per unit. For producing single commodity, cost is 500. So for producing one unit, how much kg of raw material will be consumed? It will be 10 kg. How we get 10 kg? 500 divided by rupees 50 per kg. Similarly, 1250 divided by 50 rupees 50 per kg. So how many kg will be consumed over here? It is. It is 25 kg.
Now, next is 750 direct labor. It is 30 rupees. So, how much labor, direct labor we pay 30 rupees per hour. And labor cost incurred for per unit is 750 and 1500. Now, in order to produce one single unit of the commodity, how much labor hours will be consumed? In order to produce one single unit of the commodity, labor hour consumed will be 750 divided by 30. 750 divided by 30, is it 25 hours? And here it will be how much? 50 hours. And we have variable overheads. Okay. Total fixed overhead is 10 lakhs. Comments on the profitability of each product when total sale value is limiting factor. If you tell me total sale value is a limiting factor, decision will be taken on the basis of profit volume ratio. So I will calculate PV ratio for product A as well as product B. And where PV ratio is higher, that product is giving me more profit. So if I have option to sell any one of the product, definitely I will sell that particular product whose PV ratio is higher. Because that particular product is giving me a more profit margin on sales. Second, raw material is in short supply. अगर raw material short supply है, तो contribution per kg of raw material के basis पे decision लोगे. Decision will be taken on the basis of contribution per kg of raw material. So what should be your formula? Contribution divided by raw material in kg. Where contribution per kg of raw material is higher, their profit margin is higher. Where contribution per kg of raw material is lower, margin is lower. So definitely I will focus on that particular point at that particular product where contribution per kg of raw material is maximum or more. Similarly, when production capacity is a limiting factor. Now, if you are asking me about production capacity, I may say that here limiting factor is labor hour. If limiting factor is labor hour, decision will be taken on the basis of contribution per labor hour. Contribution divided by labor hours. Total अवेबिलिटी ओके एंड वेयर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर कैसे है लेबर आर कैसे है चाहे देखो ना आपको पर यूनिट बनाने के लिए आपका लेबर 750 रुपीज हम लोग इनकर कर रहे हैं और एंड पर आर का रेट कितना है 30 रुपीज है ना 1 घंटे का हम लेबर को 30 रुपीज देते हैं 1 यूनिट बनाने का कॉस्ट इनकर्ड आप 750 रुपीज इनकर कर रहे हो तो जब आप 750 को डिवाइडेड बाय 30 करोगे तभी तो लेबर आवर्स पता चलेगा ना 25 लेबर आवर्स एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए आपका लेबर 25 आर कंज्यूम कर रहा है सिमिलरली 1500 आर कैसे है चलो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं दिस 1500 we pay 30 rupees per hour so how many hours my labor is consumed in order to produce single unit 50 hours clear see on the screen similarly 25 hours भी मैंने निकाला is it clear fine now fourth point important है total availability of raw material is 20,000 kg हमारे पास हमारे गोडाउन में 20,000 केजी माल पड़ा हुआ है उससे ज्यादा नहीं है तो जितना 20,000 केजी माल पड़ा हुआ है भाई उससे उतने ही लिमिटेड यूनिट्स बना सकते हो जितनी आपकी कैपेसिटी है एंड मैक्सिमम जितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है कैपेसिटी नहीं है आपके पास 20,000 केजी रॉ मटेरियल है तो उतना ही माल बनेगा जितना केजी रॉ मटेरियल है इट मीन्स रॉ मटेरियल इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन दिस केस एंड मैक्सिमम सेल पोटेंशियल ऑफ ईच प्रोडक्ट इज 1,000 यूनिट आप जो भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट ए बनाओ या बी बनाओ मैक्सिमम प्रोडक्ट ए का सेल 1,000 यूनिट ही हो सकता है बी का मैक्सिमम सेल 1,000 यूनिट ही हो सकता है उससे ज्यादा नहीं आप सोल्ड कर सकते so maximum number of unit which you can manufacture is 1,000 unit you cannot go beyond 1,000 unit find out the product mix to yield maximum profit product mix कितना प्रोडक्ट ए बनाओगे कितना प्रोडक्ट बी बनाओगे so that will give you maximum profit okay so यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में टोटल अवेबिलिटी मेरा 20,000 kg है आई हैव टू चेक in that particular case raw material is a limiting factor and if raw material is a limiting factor point number 2 has to be considered so point number 2 has to be considered because raw material is a limiting factor or in a, is it short supply
So definitely I will focus on that particular product where contribution per kg of raw material is higher. अगर सपोज करो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल बी का हायर है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पहले मैं फोकस बी पे करूंगा। बी पहले मैं बनाऊंगा, लेकिन बी अगर मैं बनाऊं भी पहले, तो मैं मैक्सिमम 1,000 यूनिट से ज्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि 1,000 यूनिट ही मेरा मैक्सिमम सेल पोटेंशियल है, ऐसा कंडीशन में दिया है। तो 1,000 यूनिट बनाने के लिए बी कितना केजी माल जाएगा? 1,000 यूनिट बनाने के लिए 25 केजी जाता है पर केजी, देखो मैंने ब्रैकेट में दिखाया, तो 1,000 यूनिट बनाने के लिए 25,000 केजी चले जाएगा। तो खाली बी बनाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ बी 20,000 केजी माल पड़ा है। अब ऐसा होगा नहीं, रैंक वन हो सकता है ए आएगा, तो रैंक वन अगर ए आ गया बाई चांस, तो 1,000 यूनिट ही बनाओगे। बट पर यूनिट बनाने के लिए 10 केजी माल जाता है कि नहीं, तो 1,000 यूनिट बनाने के लिए 10,000 केजी कंज्यूम हो जाएगा। मेरे पास टोटल अवेबिलिटी कितनी है? 20,000। गेटिंग? सपोज इफ ए इज रैंक वन, देन टोटल केजी इज 20,000। पहले प्रोडक्ट ए बनाओ, बना लो प्रोडक्ट। कितने यूनिट बनाओगे? 1,000, इससे ज्यादा तो नहीं बना सकते। एक यूनिट बनाने के लिए 10 केजी जाता है कि नहीं? तो यहाँ पे कितना केजी कंज्यूम होगा? 10,000 केजी। सो वी आर गेटिंग हाउ मच? 10,000 केजी। दैट इज बैलेंस फॉर प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट बी। अब इसमें कितना यूनिट बना सकते हैं? अब इसमें जो आप बना सकते हो, कितना यूनिट बना सकते हो? इट शुड बी डिवाइडेड बाय, एक यूनिट बनाने के लिए 25 केजी जाता है। तो आप देख लो कितना आता है, मेरे ख्याल से 400 केजी, 400 यूनिट्स बना सकते हैं। बराबर है? सो प्रोडक्ट मिक्स क्या बन गया? ए 1,000 यूनिट, बी 400। दिस इज अ प्रोडक्ट मिक्स। ये आपके पास प्रोडक्ट मिक्स है। ए 1,000 यूनिट बनाओगे और बी 400 यूनिट बनाओगे, और उसका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना दो। आपके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ए का कॉन्ट्रीब्यूशन है, बी का है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट, दोनों को ऐड करो, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, ये देखो फिक्स कॉस्ट दिया है, सर्कल कर रहा हूँ 10 lakhs। आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, विच इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। क्लियर दिस पॉइंट एवरीवन? शैल आई सॉल्व दिस सम नाउ? करके दिखाओ सॉल्व। स्टेटमेंट showing contribution per labor hour, सॉरी, स्टेटमेंट showing contribution per unit निकालो। सेल वैल्यू इज अ लिमिटिंग फैक्टर ना पहले केस में, पहले चलो स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन। मटेरियल कॉस्ट 500 रुपीज है ना, विच इज 10 kg। सेकेंड इज 1,250। ये ना,
डायरेक्ट लेबर है 750 को डिवाइड करोगे 25 आवर्स आया था 1500 डिवाइडेड बाय 30 किया था आपने 30 रुपीज वेजेस देते हो 50 आवर्स आया था ब्रैकेट में लिख रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 250 एंड ईयर 500 ठीक है ना तो चलो पहले वेरिएबल का टोटल लो क्या फिर वेरिएबल 1500 3256 contribution 1 minus 2 1756 चलो ये आगे अब निकाल ले पीवी रेशियो फर्स्ट केस when sales value is a limiting factor sales value is a limiting factor 40% and here it is 35%. अब आप इसका रैंकिंग करो रैंक वन कौन है ए है रैंक टू बी है राइट रैंकिंग वन इज ए बी इज टू सेकेंड केस में क्या उसने बोला था व्हेन रॉ मटेरियल इज अ लिमिटिंग फैक्टर देखो if dear raw material is a limiting factor decision will be taken on the basis of contribution per kg of raw material contribution per kg your contribution is 1000 divided by per kg see dear per kg is 10 kg and 25 kg rupees 100 contribution is rupees 100 and here it is 1250 divided by 1750 क्या आएगा बोलो 70 तो अगेन रैंकिंग करूं तो मार्जिन किस में ज्यादा है प्रोडक्ट ए में रैंक वन रैंक टू क्लियर ना एवरीवन थर्ड केस क्या था प्रोडक्शन कैपेसिटी इज अ लिमिटिंग फैक्टर मतलब लेबर आर इज अ लिमिटिंग फैक्टर
contribution per labor hour, right? So contribution divided by labor hour. ओके डियर, देखो कंट्रीब्यूशन आपका 1000 ही था, लेबर आवर्स मैंने ब्रैकेट में लिखा था. इज इट योर लेबर आवर इज 2550? हाँ, चलो देखो क्या आता है. फर्स्ट का ₹20 पर लेबर आवर. एंड सेकेंड का नहीं, 20 50 40 होना चाहिए. 40 and 35. Again ranking. One is A, B is two. In all the cases, A is superior than B. Then let's come to the fourth part there. The fourth part is one confusion. In all the cases, product A is better than B, right? Product A is better than B. Chalo. Now, last case, availability of raw material is 20,000 kg. Computation of product mix. Product A and product B. So, पहले आप number of units निकालो. Total raw material is how many kg? 20,000 kg. तो पहले आप किस पे फोकस करोगे? प्रोडक्ट ए पे ना, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है ना. मैक्सिमम कितनी यूनिट्स बनाओगे? 1000 बनाओगे. एंड 10 kg, 10 kg माल जाता है पर यूनिट बनाने के लिए, है ना. इज इट 10,000 kg? ना. प्रोडक्ट बी कितने बनाओगे आप? बैलेंस अवेलेबल डिवाइडेड बाय पर केजी. हाउ मच इज बैलेंस अवेलेबल? 10,000 kg. एक यूनिट बनाने के लिए कितना केजी माल लग रहा है? 25 ना. इट विल बी 400 kg, 400 units. सो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स आ गया आपके पास. A how many units? 1000 unit and B is 400. ये आपका ऑप्टिमम मिक्स आ गया. चलो अब आप बना लो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट.
कंट्रीब्यूशन ए एंड बी। ए कितने यूनिट बनाओगे? 1000। बी 400 यूनिट्स बनाओगे कि नहीं? देखो उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है? 1000 and 1750। 10 lakhs आ गया। और ये कितना आएगा? चेक करो। 400 इंटू 7 लाख। भैया तो टोटल कितना हो गया? 17 लाख हुआ कि नहीं? कंट्रीब्यूशन। तो उसमें से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट देखो आपको 10 लाख दिया है। If you deduct, you will get how much? 7 lakh. 7 lakh will be your net profit. That's it. That's your final answer. Clear? Any doubt till here, everyone, what we are solving in marginal costing? We have covered limiting factor also. Okay. Fine, Jay. We will see basically question based on स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन में आई हैव टू क्वेश्चन फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वन क्वेश्चन इज फॉर सेल्स variance and sale margin variance, and one question is for fixed overheads. And one more question I have picked up where I will be covering the entire all material, labor, variable, fixed, everything. So definitely that will be a value added advantage for you. Okay. First, we'll cover sales variance. Okay. Because see, in this group, chances is for fixed overhead. Definitely I've told you fixed overhead and sales variance. Break I will give you at 12:30. Okay. Till that, we will cover at least sales variance. Compute sales and sales margin variance from the data given below. So we have budgeted quantity in units, actual quantity in units, budgeted selling price per unit, actual selling price per unit, and standard cost per unit. Fine here. See, I have given this table. So definitely in sales variance, first I will prepare my table. Can I say budgeted quantity will be multiplied by budgeted selling price? Then I will get budgeted sales. When actual quantity will be multiplied by actual selling price, I will be getting actual sales. And based on that, first, I will show you only sales variance. Then I will move towards sales margin variance. Now I'm not speaking anything about margin variance. Clear? Step by step.
computation of sales variance. Right? 240 and 50. So if I multiply, I will get 12,000. Budgeted quantity sold is 160, 25. And this will be total 4. So actually is 400, 45. It is 18,000. 200 and it is 20, 20, 4,000. Now, formula. First, sales value variance. Budgeted sales minus actual sales. So हमने सोचा था कि हम सेल्स करेंगे 16,000 का, लेकिन हमने तो एक्चुअल में ज्यादा सेल किया 22. 6,000 मोर वी हैव सोल्ड. इट इज फेवरेबल. 6,000 वैल्यू ज्यादा फेवरेबल. धनश्री, ऑपोजिट थिंकिंग. आपने सोचा था धनश्री आप 16,000 का सेल करोगे, लेकिन आपने तो ज्यादा सेल कर दिया ना 22,000 का. तो 6,000 फेवरेबल हुआ कि नहीं हुआ? लॉजिकली सोचो. रट्टा नहीं मारना है. आप मटेरियल और लेबर के एंगल से सेल्स में ऑपोजिट सोचोगे, क्योंकि सेल प्रॉफिट से रिलेटेड था, मटेरियल और लेबर कॉस्ट से रिलेटेड था. ठीक है ना? आपने सोचा था 16,000 का सेल करोगे, लेकिन आपने 22,000 का सेल्स किया, आपने ज्यादा सेल्स किया, तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया ना. इज इट क्लियर व्हाट आई वांट टू टेल यू? यस. इज इट क्लियर? फाइन. चलो, shall I proceed further? Now you split that into two parts. Sales volume variance. Volume is always in terms of quantity.
and sales price variance. Sir, what is the formula for volume variance? Budgeted quantity minus actual quantity into budgeted rate. Budgeted quantity 240, actual quantity 400 into budgeted rate is 50, राइट। सोचा था 240 यूनिट बेचोगे, लेकिन आपने 400 यूनिट ज्यादा यूनिट बेचे। अगर ज्यादा यूनिट एक्चुअल में बेचे तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। सो दिस इज 160 into 50 is 8,000 favorable, getting 160। सोचा था आप बेचोगे भाई, लेकिन आपने तो 240 यूनिट ज्यादा बेचा, आपका प्रॉफिट बढ़ गया। 40 यूनिट इंटू 25, 1000। ये भी फेवरेबल, 9,000 फेवरेबल। क्लियर। प्राइस वेरिएंस, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर प्राइस वेरिएंस? बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस ना। Budgeted price minus actual price into actual quantity. बजटेड प्राइस हमारे पास क्या है? 50 है। एक्चुअल प्राइस क्या है? 45 है। हमने सोचा था 50 में बेचेंगे, लेकिन 45 में बेचा। अरे कम प्राइस में बेचा, अपना लॉस है। इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 400। एडवर्स होना चाहिए ना, 2000 एडवर्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 400 इज 2000 ना। देन बजटेड प्राइस, क्या सोचा था? बजटेड प्राइस अपना 25 है, लेकिन एक्चुअल में क्या रेट में बेचा? 20। ये भी लॉस हुआ ना 5 रुपीज का। 25 रुपए में बिकना चाहिए था प्रोडक्ट, बेचा 20 रुपए में, 5 रुपए कम में बेचा, अपना लॉस है। इंटू एक्चुअल क्वांटिटी इज 200, 800। सॉरी, 5 2 10 होता है, 1000 एडवर्स। इज इट डियर? 3000 एडवर्स। सी, 3000 एडवर्स। 3000 एडवर्स। 9,000 favorable. So definitely 6,000 will be favorable net effect. Then volume is to be divided into two parts, sale mix variance. Sub usage, sales sub usage variance. Mix variance, revised budgeted mix quantity minus actual quantity into budgeted price. Revised budgeted mix quantity 240 is out of 400. How much it should be in front of 600 unit? If I do my calculation, I will get 360 unit. 360 यूनिट सोल्ड होने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में सोल्ड 400 हुए, ज्यादा हुए ना। 360 एज पर एक्चुअल सोल्ड होने चाहिए थे, 360 एज पर एक्चुअल सोल्ड होने चाहिए थे, लेकिन आपने तो 400 एक्चुअल में सेल की है, ज्यादा ही सेल की है। 40 यूनिट तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ना। इंटू बजटेड प्राइस क्या आपका 50 है, 2000 फेवरेबल। वाई?
160 is out of 400. So how much it should be in front of 600 unit? 240 units. Minus actual is 200. कम unit sold गया. There is a loss. 1000 advance. So 1000 favorable. Sub usage. Total budgeted quantity minus total actual quantity into budgeted weighted rate. Total budgeted quantity 400 into budgeted weighted rate 16,000 divided by 400. Check the year what you will get. जो मिक्स वेरिएंस कैसे किया देखो मिक्स वेरिएंस में आप कैसे सोचोगे you will think 240 you have produced 240 unit out of 400 आपने 240 यूनिट स्टैंडर्ड में प्रोड्यूस किए एज पर योर एस्टिमेशन आउट ऑफ 400 यूनिट यू हैव प्रोड्यूस 240 लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इज नॉट 400 एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितना है जय 600 तो 600 के एंगल से कितना क्वांटिटी सोल्ड होना चाहिए था 240 इज आउट ऑफ 600 सो 600 के एंगल से कितना क्वांटिटी सोल्ड होना चाहिए था विच इज 360 विच इज 360 होना चाहिए था लेकिन एक्चुअल में तो हमने 400 यूनिट सोल्ड किया है तो ज्यादा ही बेचा ना हमने एक्चुअल में तो फिर भी हमने ज्यादा ही बेचा तो प्रॉफिट बढ़ेगा इज इट फेवरेबल चलो लास्ट में सब यूसेज वेरिएंस क्या आ रहा है हमारे पास 8000 फेवरेबल आ रहा है फाइन सो आवर आंसर इज मैच so it is 1000 favorable 8000 favorable 9000 sales value variance verification ये हो गया आपका सेल्स वैल्यू वेरिएंस
चलो next also I should solve sales margin variance. B part. We'll complete this sum everyone. Computation of sales margin variance. Margin means what? Profit. Important. How you get budgeted profit? Budgeted selling price budgeted price minus budgeted selling price minus budgeted cost. Actual selling price. Actual profit is actual selling price minus budgeted cost. Minus budgeted cost. Important. Now your doubt is, sir, बजटेड प्रॉफिट कैसे मिला? बजटेड प्रॉफिट कैसे मिला? बजटेड सेलिंग प्राइस। सर आप जब बजटेड सेलिंग प्राइस को बजटेड कॉस्ट प्राइस से माइनस करोगे, आई रिपीट, आप बजटेड सेलिंग प्राइस को बजटेड कॉस्ट प्राइस से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा बजटेड प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे मिलेगा? अब देखो, आपका आपके दिमाग में फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट कैसे मिलेगा सर? एक्चुअल सेलिंग प्राइस से एक्चुअल कॉस्ट माइनस होना चाहिए था, लेकिन आपने एक्चुअल कॉस्ट नहीं, बजटेड कॉस्ट से क्यों माइनस किया? ये क्या लॉजिक है? हाउ यू गेट एक्चुअल प्रॉफिट? एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट इज एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। सर क्यों बजटेड कॉस्ट, क्यों नहीं एक्चुअल कॉस्ट? सर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट? Who is responsible for profit and loss? So responsible for profit or loss is a profit manager. Sir, there are two different manager in my company. One is called sales manager, one is called profit manager. Sir, sales manager is responsible for quantities only, but profit manager is responsible only for profit. So व्हेन आई कैलकुलेट माई एक्चुअल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट के एंगल से प्रॉफिट मैनेजर बोलेगा जो भी एक्चुअल सेलिंग प्राइस था उससे मैं बजटेड कॉस्ट माइनस करूंगा, मैं एक्चुअल कॉस्ट क्यों माइनस करूंगा? तो आप आर्ग्यू करोगे क्यों सर एक्चुअल कॉस्ट क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि प्रॉफिट मैनेजर आर्ग्यूमेंट करेगा कि मैं प्रॉफिट मैनेजर हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट। I repeat, profit manager will argue, I am responsible for profit. I am not responsible for cost.
सो जब मैं रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ कॉस्ट के लिए, तो मैं एक्चुअल कॉस्ट क्यों कंसिडर करूँ? फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअल कॉस्ट 10 रुपीज होना चाहिए था, लेकिन बजटेड कॉस्ट 10 रुपीज होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट 15 हो गया। तो 5 रुपए कॉस्ट बढ़ गया, तो प्रॉफिट मैनेजर बोलेगा 5 रुपए कॉस्ट बढ़ गया, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी हूँ, उसके लिए कॉस्ट मैनेजर जिम्मेदार है। आप किसको पकड़ो? कॉस्ट मैनेजर को पकड़ो और उससे पूछो कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट, आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर प्रॉफिट। सो फॉर कैलकुलेटिंग एक्चुअल प्रॉफिट, आई विल कंसिडर एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। आई विल नेवर कंसिडर एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल में अगर कॉस्ट बढ़ गया, so I'm not responsible. Cost manager is responsible. You ask that query to cost manager. Cost manager will give you justification for that particular point. I will not give you justification for that point. I will give you justification only for profit. Is it clear what I want to tell you? Clear what I want to tell you? Did you get? Yes, na Dhanashri? Yes, right? So that's why actual profit per unit is actual selling price minus budgeted cost. Remember this point. So dear, we have A, we have B. See, quantity 240 and 160. That will remain same. There is no doubt about it. Good. Fine. Now, see, budget is 50 minus budgeted cost is 30. So budgeted profit is 20. Multiply, you will get 4,800. What is budgeted selling price? 25. What is budgeted cost price? Sir, 15. Then you will get 16. 6,400. Coming towards quantity, 400 units and 200 units. There will not be any change in quantity, but your actual selling price is 40. Minus budgeted cost is 30. Here, your actual selling price is 20, but your budgeted cost price is 15. So here we get 10, here we get 5. Quantity is 600. So here it is 4,000. And here it is 1,000. So if you add up, you will be getting 7. Why? It is, sorry, it is, so the actual selling price is 45. Total sales margin variance. Formula. Budgeted sales margin minus actual sales margin. So your budgeted sales margin is 6,400, 7,000. Our margin is increased. We are expecting profit of 6,400. Again, Bhumika, I'm telling you again. You have given budgeted cost price, see 30 and 15. You have given in question. Bhumika, 30 rupees per unit and 15 rupees per unit is budgeted cost price per unit. See that. So what do you mean by actual profit? Actual profit I'm writing for you. Actual profit per unit means actual selling price minus
budgeted cost price. Always from actual selling price, we need to minus budgeted cost price, never actual cost price. Because profit manager is responsible for profit, not for fluctuation of cost. So profit manager will say that I will consider budgeted cost. Why I will consider actual cost? Clear? So here my profit is increased to 600, which is favorable. Okay. Now this I will divide into two parts. Sales margin, volume variance, and sales margin price variance. Formula. Budgeted quantity minus actual quantity into budgeted price. Budgeted quantity 240. Actual quantity 400. We sold more units, so profit will increase. Into budgeted price is 20. 160 minus 200. Again, we sold more. Profit will increase here. It will be favorable for us. So it is 160. 3,200 favorable. And here it will be 40, 400 favorable. Total, we have 3,600 favorable. Okay. Chalo. Sales margin price variance. See, it is budgeted price minus actual price into budgeted quantity. How much is budgeted price? 20. Actual price is 15. We should sold at 20, but we are able to sold at 15. You should sell at 20 rupees per unit, but you are able to sell at 15. Your profit will get reduced into budgeted quantity is 240. So 5 multiplied by 240 is 1200 advance. Budgeted selling price 10. Actual is 5. Into budgeted quantity is 160. 800 adverse. Sales margin mix variance. Sales margins sub volume variance. Mix 240 is out of 400. How much it should be in front of? 600. So we should be able to sold how much quantity? 340. But actually we have sold 400 quantity. We sold more. We sold more. So profit margin is increased into budgeted price. And your budgeted price is, can I say 20? So it is 40. 40 into 20 is 800 favorable. Getting same logic now. 160 is out of 400. So how much it should be in front of 600? 240. But how much actually we have sold? 200 unit. We sold less. हमने कम क्वांटिटी सोल्ड में सेल किया है या लेकिन वहां पे आप
सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई जिससे कर रहे हो ना, वो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट पर यूनिट। वहां पे आप मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट करते हो, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट पर यूनिट करते हो, दैट्स अ डिफरेंस। क्लियर जय, बात समझ में आ रही है? 20 रुपीज क्या है, वो सेलिंग प्राइस थोड़ी है, वो तो प्रॉफिट मार्जिन है ना, पर यूनिट। और अभी देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 10 से करूंगा। 10 रुपीज क्या है, 10 रुपीज सेलिंग प्राइस थोड़ी है, वो तो प्रॉफिट मार्जिन है ना, पर यूनिट। क्लियर? वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट इन दिस, बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, सो वी गेट इज इट 400 का प्रॉफिट कम हो गया एडवर्स, प्रॉफिट कम हो गया, दैट्स व्हाई एडवर्स। सो आप बोलोगे 400 इज फेवरेबल। अब सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम वेरिएंस फॉर्मूला, बजटेड क्वांटिटी, टोटल बजटेड क्वांटिटी, बजटेड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल, इनटू आप मल्टीप्लाई किससे करो, बजटेड वेटेड। टोटल 400, बट यू सोल्ड 600, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, 400 यूनिट बेचना था। प्रॉफिट टेबल्स में आपने लिखा, दैट्स ओके, लेकिन यहाँ पे आप प्रोडक्ट वाइज निकाल रहे हो। इनटू बजटेड मार्जिन, क्या आपका बजटेड है 6400 डिवाइडेड बाय 400। ओके, मल्टीप्लाई करके 3200, एडवर्स हुआ डियर, फेवरेबल नहीं हुआ। 400 भेजा, नहीं नहीं फेवरेबल, सॉरी, फेवरेबल, दैट्स करेक्ट, फेवरेबल, ज्यादा क्वांटिटी भेजा। यस, क्लियर? अब मैं वेरिफिकेशन भी दे दूं आपको। चलो देखो वेरिफिकेशन दे, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल सेल्स मार्जिन मेक्स वेरिएंस प्लस, फाइन एवरीवन।
Okay, everyone, take a break. We'll continue. Take a break. We'll continue after half an hour. हाँ, विल चेक दी टोटल। 1 मिनट हम लोग ब्रेक के बाद चेक करते थे टोटल। आपका सेकंड वेरिफिकेशन तो हुआ है। आई विल चेक, डोंट वरी। टेक अ ब्रेक। हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। हेलो नाउ, बट यू आर हियर। Here it should be multiplied by actual quantity, na? Budgeted price minus actual price into actual quantity, not budgeted. Actual quantity is how much? Your actual quantity over here is 400 and 200. So definitely both is adverse. It is 2000 adverse. Fine. And it is 1000 adverse. So it is 3000 adverse. So get verified. Getting? Second is sales margin volume variance. Sales margin mix variance plus sales margin sub volume variance. 3600, it is favorable equal to 400 favorable plus 3200 favorable. If you add up, you will get 3600 favorable equal to 3600 favorable. That's it. Getting? Oh, chalo. Hello everyone, now it is question number 5. Important, huh? Fixed overhead variance, huh? Fixed overhead variance. X Limited has furnished you the following for the month of October. You have given output, which is 1 lakh unit and 1,26,000 unit. Ours is 20,000 hours and 25,200 hours. Fixed overhead is 2 lakh 40 and 2 lakh 64,600. Working days is 25 days and 24 days. There were 5040 hours of abnormal idle included in actual hour. So 5040 is abnormal idle included in actual hour. From actual hour, can you see this actual hour? 2540, 25,200. I will deduct how much? 5040. So how much actual hour labor has work? 20,160. 20,160 I'm going to write in format. Okay, fine. कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कैसे कैसे निकालते थे फिक्स ओवरहेड वेरिएंस? कुछ याद है? कुछ याद है? चलो पहले एक बार रिवाइज करवाता हूँ। रिवाइज मतलब टेबल बनाता हूँ। 20,640, रिमेंबर दिस, 2160। क्या करते थे हम?
वन इज बजट एंड वन इज एक्चुअल, ऐसा लिखते थे। देन फॉर्मेट पे मैं क्या करता था, पहले लिखता था यूनिट्स, आर आर मींस रिकवरी रेट ईयर एंड एक्सपेंस, याद आ रहा है। एक्चुअल में क्या लिखते थे, यूनिट्स एंड एक्सपेंस। फिर आप आर्स लिखते थे, रिकवरी रेट एंड एक्सपेंस, आर्स एंड एक्सपेंस। ओके, डेज रिकवरी रेट एक्सपेंस, डेज एंड एक्सपेंस। अभी पुट अप द डेटा अकॉर्डिंगली। You have units 1 lakh budgeted and actual is 1 lakh 26 now. Hours 20,000 hours budgeted, but actual में idle hour deduct करने के बाद we get 2160 hours ना. Find here days 25 days and 24 days. Okay, cost budgeted cost 2 lakh 40. Everywhere I will write 2 lakh 40. Right, and 2 lakh 64 600. चलो अब आप रिकवरी रेट कैसे निकालोगे, डिवाइड करोगे ना, 2,40,000 divided by 1. 2.4 is the recovery rate. Here it is 12 is the recovery rate. Divide करोगे ना, and here recovery day is 9,600 recovery days. Right? ये पहले आप फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करते थे, फिर इफ यू रिमेम्बर आप फिक्स ओवरहेड का अकाउंट बनाते थे। जब आप फिक्स ओवरहेड का अकाउंट बनाते थे, एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड इज हाउ मच, 2,64,600. So your entry is fixed overhead to bank actually incur 2,64,600. Okay. Then you write by recovery cost. By recovery cost. Your recovery cost. How much cost you should incur? Actual में you have not produced 1 lakh unit. Actual में you have produced 1,26,000. Multiply by 2.4. 3,02,400. We should incur. Minus 264,600. 37,800 will be over recovery. Over recovery. So we have incurred less. We should incur 3,02,400. But actual में तो खर्चा कम हुआ. खर्चा होना चाहिए था कितना, 3,02,400 का खर्चा होना चाहिए था, बट एक्चुअल में तो खर्चा कम हुआ ना, 2,64,600 का ही हुआ ना, तो एक्चुअल में खर्चा कम हुआ, प्रोविजन ज्यादा था, इट इज कॉल्ड ओवर रिकवरी। ओवर रिकवरी इज प्रॉफिट, 37,800 का प्रॉफिट हुआ। फिर आप फॉर्मूला यूज करते थे, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, रिकवर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो रिकवर्ड कॉस्ट में से जब एक्चुअल कॉस्ट माइनस करोगे 37,800 आपको फेवरेबल मिलेगा, फेवरेबल। देन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के पीछे दो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल थे, एक एक्सपेंस मैनेजर और एक प्रोडक्शन मैनेजर। एक्सपेंस मैनेजर से फॉर्मूला बना था फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फॉर्मूला इज बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। प्रोडक्शन मैनेजर से फॉर्मूला बना था फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला इज बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट इनटू रिकवरी रेट। बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट इनटू रिकवरी रेट। ओके, देन फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, डियर, कैपेसिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ आवर्स. So fixed overhead volume will get divided into two parts: fixed overhead capacity, fixed overhead efficiency. Capacity formula is budgeted hours minus actual hour into recovery rate.
I repeat, budgeted hours minus actual hour into recovery rate. Then fixed overhead efficiency. Efficiency आप कैसे निकालोगे? 1 लाख यूनिट बनाने के लिए आपके लेबर ने 1 लाख यूनिट बनाने के लिए आपके लेबर ने 20,000 आवर्स प्रोड्यूस किया एक्चुअल में। 1 लाख यूनिट बनाने के लिए, देखो 1 लाख यूनिट बनाने के लिए आपके लेबर ने 20,000 आवर्स कंज्यूम किया। तो 1,26,000 यूनिट बनाने के लिए आपके लेबर की कितने आवर्स जाने चाहिए थे? दैट इज कॉल्ड बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। Budgeted hours for actual output minus actual output, budgeted hours for actual output minus actual hour into recovery rate is fixed overhead efficiency variance. Then fixed overhead capacity में variation आने के दो रीजन थे। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज के एंगल से फॉर्मूला क्या बनता था? Fixed overhead calendar variance, and one is fixed overhead revised capacity variance. Fixed overhead calendar variance formula: budgeted days minus actual days into recovery days, budgeted days minus actual days into recovery rate. And fixed overhead revised capacity variance, 25 डेज में मेरे वर्कर ने 20,000 आवर्स काम किया है। एक्चुअल में 25 डेज में 20,000 आवर्स काम किया है, तो 24 डेज में कितने आवर्स काम होना चाहिए था? दैट इज कॉल्ड बजटेड आवर्स फॉर इन एक्चुअल डेज। Budgeted hours for actual days minus actual hour. Budgeted hours for actual days minus but actual hours into recovery rate. Budgeted hours for actual days minus actual hour into recovery rate will give you fixed overhead revised capacity variance. Okay. Now these are all the formulae. Chalo, ab now I'm solving the sum. Let's see that. Here units 1 lakh यूनिट है ना? 1,26,000 पहले आवर्स ले, देन 20,000 आवर्स है। Here it is 25,200 minus idle hour is 5040. So we get 2150 here, right? Here it is 25 days and 24 days. Expenses 2,40,000. 2,64,600.
और यहाँ पे रिकवरी रेट का जरूरत ही नहीं। फिक्स टू बैंक 2,64,600 बाय रिकवरी कॉस्ट कितना इंकर्ड होना चाहिए था? 1,26,000 यूनिट के एंगल से इनकर कितना होना चाहिए? 3,02,400। 37,800 इज ओवर रिकवरी। फिक्स टू कॉस्ट वेरिएंस इज रिकवर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। रिकवर्ड कॉस्ट 3,02,400 माइनस एक्चुअल कॉस्ट 2,64,600। फेवरेबल ना दिया। 3,02,400 माइनस 2,64,600। 37,800 फेवरेबल। खर्चा होना चाहिए था 3,02,400 का। लेकिन खर्चा कितना हुआ? 2,64,600 कम का खर्चा हुआ, तो डियर फेवरेबल ना। अब ये प्रॉफिट के पीछे दो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन मैनेजर एंड एक्सपेंस मैनेजर। चलो पहले एक्सपेंस मैनेजर के पास चलते हैं। ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ एक्सपेंस मैनेजर। आपको एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है एक्सपेंस मैनेजर में, तो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। एक्सपेंस मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर। एक्सपेंस मैनेजर से फॉर्मूला कौन सा बनता है? फिक्स्ड बॉडी एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फॉर्मूला बनता है बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट कितना है अपने पास? 2,40,000। एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 2,64,600। तो कॉस्ट तो ज्यादा इनकर हुआ है, ये अपने लिए एडवर्स है। 2,40,000 इनकर होना चाहिए था, लेकिन इनकर कितना हुआ? 2,64,600। कितना ज्यादा हुआ?
24,600 ज्यादा इनकर हुआ, तो ये तो अपने लिए एडवर्स है। प्रोडक्शन मैनेजर से फॉर्मूला क्या बनेगा? फिक्स्ड ओवरहेड्स, वॉल्यूम वेरिएंस, बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स इनटू रिकवरी रेट। बजटेड यूनिट्स, कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे? 1 लाख, लेकिन एक्चुअल में कितने यूनिट बने? 1,26,000। ज्यादा यूनिट बने, ज्यादा यूनिट बने, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो अपना प्रॉफिट बढ़ेगा। इफ यू प्रोड्यूस मोर योर प्रॉफिट विल इंक्रीज इंटू 2.4। अभी देखो ये फेवरेबल है, लेट्स चेक। 26,000 इंटू 2.4, 60 to 400 फेवरेबल। आंसर वेरीफाई हो रहा है? यस, राइट नाउ। अब फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम प्रोडक्शन वेरिएंस में, वॉल्यूम वेरिएंस में फेवरेबल होने के पीछे दो रीजन थे, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। सी डियर, कैपेसिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ आवर्स। फॉर्मूला क्या होगा? बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रिकवरी रेट, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी फॉर्मूला, बजटेड आवर्स। हाउ मच इज बजटेड आवर्स? 20,000 आवर्स काम चलना चाहिए था, लेकिन काम कितने आवर्स चला? 20,160। ज्यादा आवर्स काम चला, ज्यादा आवर्स काम चला, ज्यादा आवर्स काम हुआ तो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस है, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस हुए तो अपना प्रॉफिट बढ़ेगा। इंटू रिकवरी रेट 12 है, फेवरेबल है ये। सो 160 बचेगा, विच विल बी 12, 1920 फेवरेबल। क्लियर? अभी फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी पे हो गया। हाउ टू कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी? है एफिशिएंसी। 1 लाख यूनिट बनाने के लिए, एक्चुअल में 1 लाख यूनिट बनाने के लिए मेरे लेबर ने, बजट में 1 लाख यूनिट बनाने के लिए मेरा लेबर 20,000 आवर्स कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 1 लाख यूनिट थोड़ी बना, 1,26,000 यूनिट बना। कितने आवर्स काम चलना चाहिए था एज पर एक्चुअल प्रोडक्शन? चलो देखते हैं कितने आवर्स काम चला। 1,26,000 इंटू 25,200 आवर्स काम चला। फॉर्मूला, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स into recovery rate. Budgeted hours for actual production is 25,200 hours minus actual hour 20,160 into recovery rate is 12. बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, काम कंप्लीट होना चाहिए था 25,200 आवर्स में, लेकिन काम एक्चुअल में कंप्लीट हुआ 20,160। अरे मेरे लेबर ने कम आवर्स कंज्यूम किया, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? काम कंप्लीट होना चाहिए था 25,200 आवर्स में, लेकिन एक्चुअल में तो मेरे लेबर ने कम टाइम में काम कंप्लीट किया। एफिशिएंसी की बात चल रही है, एफिशिएंसी। माय लेबर कंज्यूम लेस आवर, इट मींस माय लेबर इज एफिशिएंट, my profit will increase, it is favorable, we can say that. Let's check what we get. 25,200 minus, it is 2160, which should be into 12.
6480 favorable. You check plus 1920. 64,200 favorable. Yes, my answer get match. Now, अब कैपेसिटी में वेरिएशन होने का क्या कारण था? कैपेसिटी में वेरिएशन होने का दो कारण था, एक था फिक्स्ड ओवरहेड, कैलेंडर वेरिएंस. बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज इंटू रिकवरी डेज. बजटेड डेज कितने दिन काम चला? 25 डेज काम चलना चाहिए था, लेकिन चला कितने दिन? एक दिन कम चला. एक दिन कम चला तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो लॉस होगा. हाउ व्हाट शुड बी माय इंटरप्रिटेशन? काम होना चाहिए था 25 डेज, लेकिन काम हुआ कितने डेज? 24 डेज. एक दिन कम हुआ, एक दिन कम हुआ. तो उतने, to that extent my production get reduced, and to the extent my production get reduced, it is my loss. Into what is our day ka recovery rate? Day ka recovery days is 9600. So this 9600 is adverse nadia. Now what should be my interpretation for fixed overhead revised capacity variance? Huh? See, in 25 days, in budget 25 days, my labor should work 20,000 hours. 25 दिन में 20,000 घंटे काम होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में तो 24 दिन ही काम हुआ है. तो 24 दिन में कितने आवर्स काम होना चाहिए था? निकालो. 19 काम होना चाहिए था. व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? स्टैंडर्ड आवर्स इन एक्चुअल डेज माइनस एक्चुअल आवर्स into recovery rate. Standard hours in actual days 19,200 hours minus actual hours. Actual hour is 2160. ज्यादा दिन काम चला ना, ज्यादा दिन काम चला तो अपना प्रॉफिट है. इंटू रिकवरी रेट इज 12. 19,200 आवर्स होना चाहिए था, लेकिन 2160 आवर्स काम हुआ. तो कितने आवर एक्स्ट्रा काम हुआ? 960 आवर एक्स्ट्रा. 960 आवर्स एक्स्ट्रा काम हुआ, तो टू दैट एक्सटेंट प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा. 11,560 फेवरेबल. फेवरेबल 11,560 फेवरेबल. 520 sorry favorable minus 9,600 adverse. So 1920 favorable. The answer get matched. Shall I show my present, my verification also to you? Verification. Fixed overhead cost variance equal to fixed overhead expenditure variance plus volume variance. 37,800 favorable. Twenty-six, 24,600 adverse. 62,400 favorable. Next, fixed overhead volume variance
equal to fixed overhead capacity variance plus fixed overhead efficiency variance. 60 to 70 favorable. Cost is 1920 favorable plus 60 favorable. Fixed overhead capacity variance. Fixed overhead calendar variance. Fixed overhead revised capacity variance. Capacity variance 1920 favorable 9600 adverse plus 11520 favorable 1920 favorable 1920 favorable. This is your verification. लेट इट बी मैंने तो आपको मैक्सिमम फिक्स्ड ओवरहेड जहां तक चाहिए जो वेरिएंस बन सकता है मैंने दे दिया धनश्री अगर वो मॉड्यूल में नहीं है तो आप उसको नहीं भी निकालोगे चलेगा सी यू आर सॉल्विंग वन पॉइंट एक्स्ट्रा एग्जामिनर विल नॉट डिडक्ट योर मार्क्स गेटिंग नाउ दिस इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन डियर फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछ सकता है दिस इज finally all the possibility I've considered in one example itself and one question definitely for 8 marks ये fixed overhead आएगा ही आएगा I'm telling you हमने यूनिट्स भी लिया हमने आवर्स डेज सब कुछ लिया है एग्जाम में से छोटा क्वेश्चन भी बना सकता है वो आपको डेज नहीं देगा सिर्फ यूनिट एंड आवर्स देगा या आवर्स नहीं देगा डेज देगा लाइक दैट
चलो एवरीवन एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. See that question number 6. It's overall revision for material, labor and variable overhead variance. Okay, fixed overhead आपने देख लिया. सेल ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड मार्जिन भी आपने देख लिया. सेल्स ओवरहेड एंड सेल्स मार्जिन भी आपने देख लिया. अब ये क्वेश्चन में मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड देख लेते हैं. एंटायर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका कवर हो जाता है तीन क्वेश्चन में जो मैंने आपको सॉल्व करवाया. सी, जेड लिमिटेड uses standard costing system in manufacturing of its product M. Standard cost per unit of M is as follow. Direct material is 2 meter. At the rate rupees 6 per meter, it is 12. Direct labor 1 hour. At the rate 4.40 per hour, it is 4.40. Variable overhead 1 hour. At the rate 3 per hour, it is 3. Total is 19.40. During July 2016, 6,000 unit of M were produced. 6,000 unit of M were produced and the related data are as under. So actual production is 6,000 unit. Okay, so we have produced 6,000 unit. Fine. But direct material acquire. Acquire means purchases 19,000 meter at the rate 5.70 per meter. Fine. Direct material consume 12,670 meter. Now, dear, my question is, when you prepare a table and in actual quantity, you write the actual quantity is direct material acquire or direct material consume. What we should write? Should I take direct material acquire or direct material consumption in actual quantity? Actual quantity means what? Consumption or acquire? Yes, dear. That's okay. Yeah, it's mean consumer. Always it means consume. So we need to consider 12,670 meter. Okay, fine. Uh, then we have direct labor. We don't have direct labor ka hours. We don't have rate. Variable overhead, we have 2475. Variable overhead efficiency variances. Rupees. Variable overhead efficiency variance is rupees 1500 adverse. Variable overhead are based on direct labor hours. So variable overheads are based on direct labor hours. Okay. Definitely always remember dear, जितना variable का hours रहेगा उतना ही labor का भी hours होगा. Okay. So whatever is direct labor hours, that will be variable overhead hours. Remember. Now, there was no stock of raw material in the beginning. You are required to complete the missing figure. So पहले आपको क्या निकालना है? You are required to complete the missing figure and work out the relevant variance. चलो पहले मिसिंग फिगर क्या है वो एनालाइज करेंगे. एंड मिसिंग फिगर को एनालाइज करने के बाद वो मिसिंग फिगर निकालना पड़ेगा. फिर उसके बाद मिसिंग फिगर निकालिए, आपका टेबल रेडी हो गया, तो यू कैन कैलकुलेट ऑल योर रेशियोज. चलो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड आर बेस्ड अपॉन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 6,000 यूनिट्स. Actual production is 6,000 units.
एक्चुअल प्रोडक्शन इज 6,000 यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg माल जाता है, सो इज इट 12,000 kg? 6,000 यूनिट लेबर कंज्यूम नॉर्मली 1 आवर। No, rate is 6, which is given to you in the question. The rate 6, 4.4 and 3, right? So amount कितना आ गया? 72,000। 6,000 into 4.4, 26,400, 18,000. Now actual consumption 12,670. What is the rate? Is it direct material acquire is 5.70. 72,219. This is not given, not given. Rate is also not given, not given. But amount is given somewhere. Variable overhead incurred 2475. That's given to you. And labor overhead is 27,950. 27,950. This is given. बराबर है? This is given. I'm writing also. 2475. 475. This is given. Right? So this is a missing figure which we need to calculate. Now, how you can calculate missing figure? How you can calculate missing figure? Did you have directly given any variance? Did you have given any variance directly in the question? Which Dhanashri, which variance is directly given? Tell me. Yes, Jatin. We have already given. बराबर है हमको ऑलरेडी ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस ही है। अगर ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस हम यूज कर लेना तो मुझे एक्चुअल आर मिल सकते हैं। देखो एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था अपना? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब इसमें अपने पास अवेलेबल जो है टिक करता हूँ। अपने पास स्टैंडर्ड आर है लेकिन एक्चुअल आर नहीं है, स्टैंडर्ड रेट भी है और ये आंसर भी है 1500 एडवर्स। तो फिर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो मुझे एक्चुअल आर मिल सकता है, और अगर एक्चुअल आर मिल गया ना वेरिएबल का, तो उतना ही आर्स किसका होगा? लेबर का। जितना वेरिएबल का आर होगा उतना ही लेबर का आर होगा, और रेट तो दिया है, फिर मल्टी रेट निकाल सकता हूँ, अमाउंट है डिवाइडेड बाय आर। तो कैन आई से स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट मिल जाएगा, और एक्चुअल रेट मिल गया, मेरा फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट। फिर मैं वेरिएंस कैलकुलेट करता हूँ। चलो नाउ आई शुड यूज वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस फर्स्ट। Remember dear, efficiency is always calculated in terms of hours. Standard hours minus actual hours into standard rate. यही है ना फॉर्मूला? स्टैंडर्ड आवर्स 6,000 आवर्स, एक्चुअल आवर्स पता ही नहीं है। स्टैंडर्ड रेट 3 है देखो, और ये है 1500 एडवर्स ना। अगर ये एडवर्स आया तो एडवर्स क्यों है? क्योंकि एक्चुअल आवर ज्यादा था। अब चलो इसका आंसर निकालते हैं। ये 1500 जो है ना, इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दो।
अच्छा, अब आपको ये बात समझनी है, आपका एक्चुअल आवर 500 आवर ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि आपको दूसरा एडवांस है तो 6500 6,500 आवर्स रहेगा ये। अब नाउ यू कैन राइट ओवर हियर 6,500 आवर्स। ऐड करना पड़ेगा भाई, क्यों ऐड करना पड़ेगा? एडवर्स है, एडवर्स क्यों है? क्योंकि एक्चुअल आवर ज्यादा रहेगा ना। एक्चुअल आवर 6,500 है, स्टैंडर्ड आवर 6,000 है, तभी तो एडवर्स आया रहेगा ना आंसर। इज इट क्लियर? प्लस माइनस नहीं होगा। फॉर्मूला माइनस बोल रहा है, लेकिन आपको लॉजिक यूज करना है, क्योंकि आंसर एडवर्स है। एडवर्स माइनस होता है, और माइनस माइनस के तो प्लस हो जाएगा। चलो मैं इसका एक और सिंप्लीफिकेशन आपको देता हूँ, कैसे मानेगा। फाइंड एडवर्स है, एडवर्स एडवर्स का मतलब समझता है माइनस है, सही। तो ये 500 एडवर्स है, एडवर्स मतलब माइनस 6,000 माइनस एक्चुअल। अभी एक्चुअल आर को यहाँ पे घूम, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -500 को वहां पे लेके जाओ, प्लस हो जाएगा। तो 6,500। आप बोलोगे आपने -500 क्यों लिखा? क्योंकि वो वर्ड एडवर्स है, एडवर्स। एडवर्स मतलब वो ऑलरेडी नेगेटिव है। क्लियर? अभी अभी बात समझ में आई सबको? वो एडवर्स था, एडवर्स मतलब माइनस ही होगा ना। क्लियर? देखो 1,500 डिवाइडेड बाई 3, लेकिन 1,500 एडवर्स है, एडवर्स मतलब ऑलरेडी माइनस है वो। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, 6,500। हाँ ये हो गया। अब आप रेट निकाल सकते हो, निकालो रेट। 27 डिवाइडेड बाई 6,500 करो, देखो रेट क्या आता है। 4.3 आएगा। 2,475 डिवाइडेड बाई 6,500, 3.15 आएगा। नाउ ऑल योर फिलिंग द ब्लैंक्स इज कंप्लीट। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ ना। चलो। चलो अभी देखो, मटेरियल में तीन वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? 72,000। एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 72,219। 219 एडवर्स। मटेरियल रेट वेरिएंस एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, रेट का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट क्या था? 6 माइनस 5.7 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, और एक्चुअल क्वांटिटी इज हाउ मच? 12,670। देखो क्या आता है। 3,801 फेवरेबल आ गया। क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। या देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी 12,000 है, एक्चुअल है 12,670 इंटू स्टैंडर्ड रेट है अपना 6। ये एडवर्स होगा ना। 4,020 एडवर्स नहीं होगा?
3801 फेवरेबल है, डिडक्ट करके चेक कर लो, 219 एडवर्स बराबर मैच होता है आंसर। सेकेंड है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है आपका 26,400 माइनस एक्चुअल कॉस्ट क्या है 27,950। एडवर्स लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स into standard rate. Standard hours is 6,000. Actual hour is 6,500. Into standard rate is 4.49. 2,200. Adverse labor rate variance. Standard rate minus actual rate into actual hours. So standard rate क्या है? Standard rate है 4.4, actual rate है 4.3. Into actual hours है 6,500. 650 फेवरेबल। डिफरेंस चेक कर लो, 1550 एडवर्स ही आएगा बराबर। क्लियर ना एवरीवन व्हाट वी आर डूइंग। अब उसके बाद क्या रहेगा आपका वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालोगे नहीं, राइट। ये फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यही है ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है देख लो, 18,000 माइनस 2475, 2475 इज इट एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस हमको क्या दिया है, वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट आंसर 1500 एडवर्स था। इसको भी यूज करो एडवर्स। एंड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल। देखो स्टैंडर्ड रेट क्या है आपका, 3 माइनस 3.15 into actual hour. Your actual hour is 6,500 hours. चेक करो 2475 एडवर्स पे मैच होता है। ऑल
Material, labor, and variable are calculated. All variance are calculated. Now, question number seven, I have set for activity-based costing here. So one question, you will be getting a practice for activity-based costing. Fine. Let's see. Question number seven, activity-based costing. See, a company produces four product PQRS. The data relating to product activities are as production activities are as follow. You have given quantity 1,000, 10,000, 1,200, and 14,000. Then you have given material cost per unit 10, 10, 32, 34.
Direct labor hour per unit 1143. Machine hour per unit 0.50, 0.50, 2 and 3. Then direct labor hour per unit 6, 6, 4 and 18. See, overhead applicable to machine are machine oriented activity. Overhead applicable to machine oriented activity. Can I say machine oriented activity का driver machine hours होना चाहिए. तो उसके पहले आपको machine hour निकालना पड़ेगा. Overhead relating to ordering material का driver number of material order होना चाहिए. Setup cost का driver number of setup होना चाहिए. Administrative overhead for spare part number of spare part होना चाहिए इसका driver. Material handling number of time material is handled. इसका driver होना चाहिए. Right? अभी देखो what we have given. The following further information has been complied. See, number of setup. How much is total number of setup? We'll calculate that. Number of material order, will calculate that. Number of time material is handled and number of spare part. So it's 30. Number of spare part. Machine hours निकालेंगे. Machine hours. See, how you calculate machine hour? Machine hour per unit is 0.50 multiplied by 1000. So it will be 500 hours. Then 0.50 into 10,000, 5,000 hours. 2 multiplied by 1200, it is 2,400 hours. 3 into 14,000, 42,000 hours. Forty-nine 900 hours. This is total machine hours. Select a suitable cost driver for each item of overhead expense and calculate cost per unit of cost driver. Yes. ठीक है. You need to calculate cost driver rate. पहला step. Using the concept of compute factory cost per unit of each product. So using activity based costing, you need to calculate your cost using activity based costing. Shall I proceed? In activity based costing, first you need to calculate cost driver rate. Associated cost divided by number of drivers. Soon you calculate cost driver rate, you can prepare your cost sheet by using ABC. And you need to calculate what factory cost per unit of each product. चलो ठीक है. Now this is activity based costing. Calculate total machine hours. PQRS. 1000 unit
Machine hour per unit is 0.5. Activity cost divided by number of travels. First, machine oriented activity. Driver is machine hours. Machine oriented activity. What is the cost? 1,49,700. What we are getting? Second activity is material ordering, dear. Number of orders. So it is 7680 divided by number of order is 30. So you have taken a total number of order is 30. 256. Third, setup cost. Number of setup. 17,400. Associated cost divided by number of setup is 50. 348. Next, admin for spare part. So number of spare part. Right here. So associated cost is 35, 3450 divided by number of spare part is 26. 34,380 it is.
Finally, it is material handling. Number of time material handled. 39 to 40 to 94. 32 94 divided by 81. 374. Clear? Now simply now I can go for my calculation part. Computation of factory cost per unit. Thousand unit, 10,000 unit, 1200 units, and S is 14,000 unit here. Right? These are all the production. We see you have calculated cost driver rate. Okay, first you will write what? Material plus labor will give you prime cost. After prime cost, various activity. First is machine oriented activity, rate is 3 per hour. Then material ordering activity, setup cost, admin. You need to calculate all these things, right? Chalo. Now, very first thing, see material cost and labor cost. Will give you what? Prime cost. देखो अभी आपको मटेरियल कॉस्ट कितना दिया है क्वेश्चन में दिया रहेगा 101%. ये रहा मटेरियल कॉस्ट. कैन यू सी दिस 10 10 32 34. हाउ मच इज योर लेबर कॉस्ट पर यूनिट गिवन 66418. क्लियर. मटेरियल 10 10 32 34. लेबर 66418. 16 16 36 52. ये आपका प्राइम कॉस्ट हो गया. ऐड करोगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. फर्स्ट मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी क्या दी है 3 ना. मल्टीप्लाई बाय मशीन आर दिया है देखो आपको. आपको वो भी बता देता हूँ. You see that machine 0.5 0.5 2 and 3. 0.5 0.5 2 and 3. So it is 1.5 1.56 and 9. Getting. And after that we have material ordering.
Let's check. Material ordering. Is it material ordering is how much? Whatever is driver rate into number of time material is ordered. Is it? See this column. 312, 312. Driver rate 256. 312, 312. Driver rate into number of time material is ordered divided by production. Why divided by production? You are calculating per unit. So calculation कैसे होगा? Driver rate देखो 256 दिया है material ordering. 256 into number of driver is 3. Production is 1000. 256. Number of driver is 12. Production is 10,000. 256. Number of driver is 3. Production is 12,000, 1200. 256. Number of driver is 12 divided by 14,000. Setup cost. Setup activity. 348 multiply by number of driver is number of setup is 3 divided by production 1000. 348 multiply by number of driver is 18 divided by 1000. 348 driver rate. Number of driver is 5 divided by production is 1200. 348 multiply by number of driver is 24 divided by 14. 1.45. 348 into 24. 0.60. Next activity is setup, setup, setup. Admin for spare part. Driver rate 955. Number of driver is 6 divided by 1000. Number of driver is 15
divided by 10,000. Number of driver is 3. Well, getting क्यू 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 में मिस्टेक किया है? अच्छा, यूनिट से क्यों कर रहा हूँ जतिन? लास्ट में ये देखो, यूनिट से क्यों कर रहा हूँ, ये देखो जतिन। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंप्यूट फैक्ट्री ओवरहेड। क्या है ये जतिन? फैक्ट्री कॉस्ट क्या पूछा है? पर यूनिट ना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ने पर यूनिट पे कैलकुलेट किया। अगर मैं कॉस्ट पे करता हूँ ना जतिन, तो भी रॉन्ग नहीं है। तो क्या करोगे मालूम है? जो फाइनल टोटल जो भी आएगा ना, फैक्ट्री कॉस्ट आएगा अमाउंट, उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, वो भी आंसर आएगा ना पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट पूछा है इसलिए मैं पर यूनिट से सॉल्व कर रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है। अगर कॉस्ट बोलता तो मैं कॉस्ट से सॉल्व करता हूँ। अब देखो, 955 × 6, 5.73। 43। 0.82। चलो, लास्ट एक्टिविटी क्या है आपके पास? मटेरियल हैंडलिंग है। हाँ, उसका ड्राइवर रेट आपके पास 374 था ना? क्या मटेरियल में डिवाइड नहीं किया? मटेरियल पर यूनिट ही दिया है ना? अच्छा, स्टडी मटेरियल में डिवाइड नहीं किया, लास्ट में डिवाइड किया रहेगा जतिन। लास्ट में डिवाइड करके पर यूनिट निकालोगे, आप देख लो। 374 मैं लास्ट में पर यूनिट निकालू, मैं पहले से निकालू, क्या फर्क पड़ रहा है? इंटू नंबर ऑफ ड्राइवर इज 6 डिवाइडेड बाय 1000। नंबर ऑफ ड्राइवर इज 30 डिवाइडेड बाय 10,000। नंबर ऑफ ड्राइवर इज 9 डिवाइडेड बाय 12। पर यूनिट लिखो, 2.24, 1.1, 2.81 and finally 0.96। सबका टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।
27.28. 27.29. 108 point. 63.6. This is your manufacturing cost. Series.
Well, one question. Question number 8, we have already solved in class. You will manage to do this. Question number 9 will solve. Question number 9 is based on transfer pricing. Okay. See what we have given. This is a question based on transfer pricing. Transferor Limited has two processes, preparing and finishing. The normal output per week is 7,500 units completed at a capacity of 75%. Transferee Limited has production problem in preparing and require 2,000 units per week to prepare material for their finishing process. Okay. The existing cost structure of one prepare unit. The existing cost structure of one prepare unit of Transferor Limited at the existing capacity is as follows. Material is 2 per unit, 100% variable. Labor is 2, 50% variable. Overhead is 4, 25% variable. Sale price of the completed unit of Transferor Limited is 16 with a profit of 4 per unit. Selling price is 16 with a profit of 4. If selling price is 16 with a profit of 4, it means cost price is 12. Is it? Cost price will be 12. Now, contrast the effect on the profit of Transferor Limited for 6 months. 25 week of supplying units of Transferor Limited with the following alternative transfer per unit. Marginal cost. In first case, the Transferor Limited will transfer to Transferee Limited. Transferor Limited will transfer at marginal cost. What do you mean by marginal cost? Marginal cost means variable cost. So you need to calculate marginal cost. You have given material, you have given labor. Variable portion is 50%. And you have given overhead 4. Variable portion is 25%. So you will take total of that, you will get your marginal cost. So, and you need to explain the effect on profit. At present, your profit is 4 rupee per unit. And if transfer price will be, if transfer price is 5 rupees, say for example, profit is 4. So in that case, we can say that 1 rupee profit will get increased. I don't know that. We have to do a calculation for that first. Okay, so first, your transfer price will be based on marginal cost. What do you mean by marginal cost? Variable cost. Then it is marginal cost plus 25%. Whatever is marginal cost. Suppose marginal cost is 10 rupees. In that, add 25%, 2.5. So transfer price is 12.5. Getting. Now, if then I need to also explain the effect on profit, whether my profit is increased or reduced. Next is if marginal cost plus 15% return on capital employed. Capital employed is 20. You have given 20 lakhs. So 20 lakh ka 15% you will calculate. 15% you will calculate. Whatever answer you get, that should be divided by your production. Number of units. And I suppose your number of unit will be 50,000 units. How it's from 50,000 units? 2,000 unit per week. Multiply by 52 weeks. 25 weeks, I suppose. Yeah. Why 25 weeks? Because 25 weeks. So number of units will become 50,000. So if you divide your capital employed by 50,000, your answer will be in per unit. So whatever, see, whatever will be the marginal cost plus 15% return on capital employed, whatever is return on capital employed divided by 50,000 unit. So you will get per unit. So marginal cost per unit plus 15 capital
Capital employed per unit you will add, you will get total per unit transfer price. Existing cost. Now, what do you mean by existing cost? Your existing cost is 8 rupees. How you get 8 rupees? See over here. 2 plus 4, 8 rupees. And cost of preparing profit is, so you will transfer at 8 rupees. Okay. Now, next is existing cost plus portion of profit on the basis of preparing project. Portion of profit on the basis of preparing project should be divided by total cost, multiply by unit profit. Multiply by unit profit. Okay. Portion of profit on the basis of preparing cost. Portion of profit is 8 rupees divided by your total cost is 12. Your total cost is 12. How you get 12? See, 16 minus 4 over 12. Existing cost is how much? 8. So 8 divided by 12. Portion of profit. Existing portion of profit on the basis of preparing divided by total cost. Multiply by unit profit is 4 rupees. And existing cost is also 8. So you will get an answer. That will be the transfer price. If you transfer at 8.50, if you transfer at 8.50, there is no increase in fixed cost. Fine. So in short, you need to calculate transfer price and the impact on transfer price. In impact of increase in transfer price, contrast the effect of profit, contrast the effect of profit of transferor limited 6 months. What will be the impact? At present, your profit is 4 rupees. If your transfer price is more than 4 rupees, say for example, your transfer price is 6 rupees, profit is 4. So you are transferring at 6 rupees. So increase in profit will be 2 rupees. We can say that. Your profit will increase by 2 rupees. Calculation will be for a 6 month, 25 weeks. Right. Very first point, we should calculate what required units. Transfer pricing. Answer number 9. Unit required is 2000 unit per week, which should be multiplied by 25 weeks. So it is 50,000 units. Oh, labor, 1 rupee. Overheads, variable overheads. Is for total marginal cost. Now the impact. If transfer at marginal cost.
Transfer price is 4 rupees. Existing profit. Existing profit. 4 rupees. So increase in profit. 1 rupee. Marginal cost plus 15% return on capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 20 lakhs. डिवाइडेड बाय पर यूनिट निकालना है तो डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन 50,000 यूनिट्स. Existing cost is 8 rupees now.
Next, if transfer price is based on existing cost, is based on existing cost plus cost of preparing project to total cost of unit profit. So existing cost to अपना 8 rupees है, right? Existing cost is 8 rupees. हाँ, year and year existing cost plus cost of preparing project. Cost of preparing cost of unit profit. Preparing profit is 16 minus 8 ना. Eight. Total cost. Selling price minus profit. Your selling price is 16, profit is 4. So it is 12 per unit. Transfer pricing. Cost. Yes. Cost of preparing a project divided by total cost. Divided by total cost into existing profit. So it is 8 divided by 12 into 4 plus 8. 10.67. Now existing profit 4 increase in profit into how many units? 50,000 units. If transfer price is at market price 8.5. Existing profit to 4 year. 4.50 is increase in profit.
will be the method of transfer pricing. So we have covered transfer pricing under various method: marginal cost plus profit, marginal cost plus return on capital employed, existing cost, market price. ट्रांसफर प्राइसिंग का एक क्वेश्चन जरूर आएगा डियर। यस 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 यस। अभी उसमें भी क्वेश्चंस काफी है धनुश्री, तो उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। आई हैव पिक अप अ क्वेश्चन वेयर आई हैव शोन डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग में।
Sorry. Manufacturing unit using the standard costing and budgetary control system has furnished the following information for the month of November 2023. You have given budget, you have given actual. Okay, now you have given output there, you have given R, you have given fixed overhead, you have given working days. See, fixed overhead cost variance, fixed overhead expenditure, volume, efficiency, capacity, calendar. Revised capacity is not asked. We will calculate revised capacity also. Shall we proceed, everyone, with this? Shall we proceed? Give me the response, everyone. Yeah, then, chalo. Chalo. I will put up all the data first. Huh? 6. Shall I prepare? Yes. Budget and actual. Unit, recovery rate, expense. Unit expense.
hours, recovery rate expense, hours expense, days, recovery rate expense, days expense, it is 30,000 units, 30,000 hours, 25 days. And cost is 45,000. Can I put like this? In actual, it is unit is 32,500, hours is 33,000, days is 26 days, and expense is 50,000. 1.5, 1.5, 1,800. Right now, factory overheads account incurred to bank. How much is actually incurred? 50,000 by recovery cost. So 32,500 unit were actually produced at the rate of 1.5. What should be the cost? 32,500 if produced at the rate of 1.5, what should be the cost? 48,750. So expense should incur 48,750, but we have incur 50. We have incur more, so it is under recovery. There is a loss. There is a loss of 50,000. Now here there is a loss. Now first formula, is it fixed overhead cost variance? Formula is recovered cost minus actual cost. Recovered cost 48,750 minus actual cost for 50,000. 1250. Is it adverse? नो, ये लॉस होने के पीछे दो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, एक है प्रोडक्शन मैनेजर और एक है परचेज मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर एंड रेट मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर से बनता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, और एक है एक्सपेंस मैनेजर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. चलो, एक्सपेंडिचर वेरिएंस फर्स्ट. Budgeted cost minus actual cost. Is it that should be a formula? See, your budgeted cost is how much? 50,000. And your actual cost is, sorry, 45 is your budgeted. 5,000 adverse. Volume is always in terms of quantity. So budgeted units minus actual units into recovery rate. How much is budgeted units? 30,000. How much is your actual unit? 32,500. Into your recovery rate is 1.5.
2,500. 3,750. Yeah, we produce more units. So more production. More production means more profit. Is it favorable? See, 3,250 favorable, 5,000 adverse. Net effect is 1,250 adverse. Then volume variance में variations होने के दो reasons होते हैं. Which are the two reasons? Fixed overhead, capacity variance, and fixed overheads, efficiency variance. Capacity is always calculated in terms of hours. Formula, standard, sorry, budgeted hours minus actual hours into recovery rate. Budgeted hours 30,000, actual hour 33. ज्यादा घंटे काम हुआ, 3,000 घंटे ज्यादा काम हुआ तो ज्यादा यूनिट बने तो प्रॉफिट बढ़ेगा. इंटू रिकवरी रेट 1.5 चेक. 3,000 इंटू 1.5, 2,500 एवरेबल. चलो एफिशिएंसी 30,000 यूनिट्स बनाने के लिए, बजट में 30,000 यूनिट्स बनाने के लिए आपके लेबर ने 30,000 आप एक्चुअल कितने बने? 32,500 यूनिट्स बनाने के लिए आपके लेबर ने कितने आवर्स कंज्यूम किए होंगे? 32,500. सो स्टैंडर्ड आवर्स, budgeted hours for actual production minus actual hours into recovery rate. बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 32,500 आवर्स काम होना चाहिए था, लेकिन लेबर ने सेम टास्क कंप्लीट करने के लिए 33,000 आवर्स काम किया. माय लेबर इज इनएफिशिएंट. 32,500 आवर्स में टास्क होना चाहिए था, 33,000 आवर्स में 500 आवर्स ज्यादा कंज्यूम किया. ही इज इनएफिशिएंट. इनएफिशिएंट, इट्स एडवर्स into recovery rate is 1.5. 750 adverse. See, 750 adverse, 4,500 favorable, net effect 3,750 adverse. आपका आंसर मैच हो रहा है. देन फर्दर कैपेसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ. फिक्स्ड ओवरहेड, कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज कैपेसिटी. दिस इज एक्स्ट्रा. एग्जाम में नहीं पूछा, नहीं निकल के चलेगा. हाँ, चलो. कैलेंडर, बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज इनटू रिकवरी रेट. हमारा बजटेड डेज, कितने डेज बजटेड काम चला? 25 होना चाहिए था, लेकिन काम तो 26 डेज हुआ. एक दिन एक्स्ट्रा हुआ तो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हुआ. एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो अपना प्रॉफिट बढ़ेगा. इनटू रिकवरी रेट डेज में 1800 है, 1800 फेवरेबल. 25 डेज में 30,000 आवर्स काम हुआ. 26 डेज में
budgeted hours for actual days minus actual hours into the current rate. बजटेड आवर्स 31 to 100 आवर्स काम होना चाहिए था, लेकिन काम कितने घंटे हुआ? एक्चुअल आवर्स कितना हुआ? 33,000। ज्यादा घंटे काम हुआ तो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस है, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस है तो अपना प्रॉफिट है। See that 31 to 100 minus 33,000 into 100, 2,700 favorable. See, 2,700 favorable plus 1,800 favorable will give you 4,500 favorable only. Getting everyone? Fixed overhead का for practice we cover up two questions. देखो दिसंबर 23 में ईवा पूछा है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये भी आपको सॉल्व करके बता दूं, वेरी सिंपल। लेट्स सी दिस। Messer Srilok Polymer has provided you the following data for the year ended 31st March 2023. Total capital employed is 45 lakhs है, debt equity ratio 1:4 है, interest rate of debt 12% है, income tax 31.2 है, effective rate 10% है, long term market capital rate based on BSE 15% है, degree of financial leverage 1.1 है, beta 1.40 है। कैलकुलेट करना है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है। अगर आपको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, कितना है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड? 45 lakhs। सर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। डेब्ट इक्विटी। सर डेब्ट 1:4 है क्या? यस। कैलकुलेट। 9 lakhs डेब्ट, 36 lakhs इक्विटी। राइट, ये हो गया। अब इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ क्या? यस, 12%। निकालो। 1,08,000। अब सर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज यूज कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। फॉर्मूला क्या है सर? EBIT डिवाइडेड बाई EBD। This can be written as EBID divided by EBIT minus interest। लिख सकता हूँ ना? फाइनेंशियल लिवरेज क्या दिया है? 1.1। ठीक है ना सर? EBIT क्या है मेरे पास? EBIT मालूम नहीं। कैनेटिक एक्स माइनस इंटरेस्ट 1 लगे।
1.10x माइनस क्या होगा देखो, 1/18 इक्वल टू एक्स। चलो एक्स को वन साइड पे लाओ, 0.10x इक्वल टू 1,18,800। EBIT 11,88,000। नहीं, अब मैं प्रॉफिटेबिलिटी बना सकता हूँ क्या? EBIT आ गया ना, मुझे ईवा चाहिए था। सिंपल। नाउ ईवा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईवा? नो पैन। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC। Capital employed we have. WACC we have. No, you don't have WACC. Equity you have, your debt you have. So now I can calculate first. No PAN. EBIT ब्रैकेट वन माइनस टैक्स लिख सकता हूँ। EBIT क्या है? ब्रैकेट वन माइनस टैक्स। टैक्स क्या है देखो भैया, 31.2 ना। No PAN. Now you want what? KE risk free plus beta minus risk free। रिस्क फ्री देखो कितना है, 10% प्लस बीटा 1.40। एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न 15 माइनस 10, 70। 80 आई ब्रैकेट वन माइनस टैक्स, ठीक है ना। आई पे चलते हैं, 12%। चलो WACC निकलना है तो वेट वाइज यू कैन कैलकुलेट। KD इंटू 1/5, KE इंटू 4/5, KD 8.256 इंटू 1/5, KE।
6 WACC. Chalo. Now notepad. Now dear, EVA. Notepad minus capital employed into WACC. Can I use the formula? Notepad कितना है? 8 lakh 17,344 minus capital employed is how much? Total 45 lakhs. 15.25%. This is your final answer. 1,31,040 is डियर मैंने यहाँ पे ही आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया ये क्वेश्चन. See the entire solution. Do you have any doubt? Entire solution. Have you understood नो का इमाम कैसे कैलकुलेट किया? कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पे? देखो मैंने यहाँ पे ही पूरा सॉल्व कर दिया है उसको. आप चाहिए तो उसका फोटो ले लो. ओके जतिन, आई डोंट हैव एनी स्टेटस अबाउट दैट. ओके. फाइन डियर, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है. एक
Everyone, see everyone, question number 6. From the following data obtained from the cost record of Messer Pallapi Oil Limited, prepare cash flow statement. Cash cash budget for the year ended 31st March, ending 31st March 2024. डियर ये क्वेश्चन मैंने क्यों पिकअप किया मैं आपको बता रहा हूँ एकदम रिसेंट क्वेश्चन है देखो ये 23 का एंड वेटेजेस 14 मार्क्स के लिए पूछा क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन सी वी हैव डायरेक्ट मटेरियल direct labor, direct expense, factory overhead, admin overheads. Cash in hand on 1st January 24 is 1,35,000. Company produced two products, lubricant oil and grease oil, and opened three sales office at Kolkata, Delhi, and Chennai for sales for their product. Actual and budgeted sales unit from October 23 to March 23 were as follow. तो आपको इन्फॉर्मेशन इसे अक्टूबर से दिया हुआ है मार्च 23 दो प्रोडक्ट बनाते हो लुब्रिकेंट ऑयल एंड ग्रीस ऑयल ठीक है तो ये आपको सेल्स दिया हुआ है अक्टूबर से लेके मार्च तक ठीक है सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ lubricant is 90 and that of product grease oil is 75. There is an increase in sale price per unit by 3 and 2 for lubricant oil and grease oil from January 24. जनवरी से भाव बढ़ गया फिर ये 20% of sale are on cash basis. रिमेनिंग 80% आर ऑन क्रेडिट बेसिस अब ये क्या बोलता है इसका मतलब 20% हमारा कैश सेल्स है तो 80% क्रेडिट सेल्स है अब जो क्रेडिट सेल्स आएगा उसका 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन नेक्स्ट मंथ एंड रिमेनिंग 50% आर कलेक्टेड इन सेकेंड मंथ ठीक है फाइन वी कैन कैलकुलेट दैट तो जो सेल आपने अक्टूबर में किया होगा उसका 50% ऑफ नवंबर में कलेक्शन करोगे और 50% ऑफ दिसंबर में लैग इन पेमेंट ऑफ क्रेडिटर फॉर मटेरियल इज 1 मंथ व्हाट डू यू मीन बाय लैग क्रेडिटर्स आर पेड आफ्टर 1 मंथ जो भी आपने परचेस किया होगा परचेस पे आपको 1 मंथ का क्रेडिट मिलता है ये दिख रहा है आपको रॉ मटेरियल्स ये आपने क्रेडिटर से परचेस किए तो 1 मंथ के क्रेडिट पे परचेस किया पेमेंट टू द लेबर आर पेड बिटवीन 1 to 5th ऑफ द ड्यू मंथ 1 to 5th इसका मतलब इंस्टॉलमेंट और वन वन week wages will be paid in the next month 4/5 will be paid in the same month 4/5 will be paid in the same month and 1/5 in next month next month 1/5 will be due in the next so last week wages will be paid in the next month meaning is that okay now next is direct expense are paid 1 month in arrear dear 1 month के लिए मैं कोई वर्किंग नोट नहीं बनाऊंगा 1 मंथ का कैलकुलेशन आप डायरेक्ट एक्सपेंस का डायरेक्टली बता सकते फैक्ट्री और एडमिन आर पेड 1.5 month in lakh 1.5 month in lakh सो इसका मतलब जो भी होगा 1.5 यू विल पे इन द नेक्स्ट मंथ 1.5 months in lakh
say for example October का means October का half of the month of payment of November will be done in November and half in January. Okay. Mr. R. Rajendra, Principal Director of a company will get superannuation from the company as on 31st March 24 after servicing the company for 24 years. His superannuation benefit comprise of gratuity of 7 lakh and benevolent fund 1 lakh. It will be a general practice of the company to release gratuity amount and benevolent fund of last day of the service. So he is going to get last day. Matlab he will definitely get this in the month of March only, na? In the month of March, he will get how much? 8 lakhs. मार्च में उसको 8 लाख रुपीस आएगा. On 1st April, the company purchased a vehicle for a director at a cost of 14 lakh by taking 2-year loan from the bank. EMI of the bank loan is auto debited 75,000 per month. Okay, तो 75,000 का EMI जाएगा. EMI is 75,000 every month. So he has taken from 1st April. Okay, fine. Fine. Chalo. Now, very first point, we have to solve this question very carefully. Huh, Evan? Sure. So first, note number one, calculation of cash receipts and collection from and collection from debtors. We need to prepare from January till March, na? Sure. Now, particular. I think collection from debtor is outstanding for 1 month and we have to prepare from January. So we will prepare our column from November onwards. हम लोग अपना कॉलम नवंबर से बनाएंगे. क्यों नवंबर से बनाएंगे? नवंबर का दिसंबर एंड जैन में आएगा. सी नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च. फाइन. चलो. नाउ sales in units. Two things: lubricant oil,
ओके एंड ग्रीस ऑयल, लुब्रिकेंट एंड ग्रीस। नवंबर का, नवंबर का सेल्स का टोटल 1200 प्लस 1440 प्लस 1080, दियर टोटल इज 3720, 3720। और ग्रीस ऑयल का टोटल नवंबर का 900, 1080, 1200, 3180। Then it is December 1100, 1320, 990। पहले यूनिट्स का टोटल लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस करते हैं। 3410 दिसंबर। देन दिसंबर का ग्रीस ऑयल का सेल्स कितना हुआ? 825, 990, 1100, 2915। जनवरी 3100 आई सपोज, या 2650। February 2600 and 1400, is it 3000? 2600 and 14,000, no, 4000, not 3000, and it is 3400। March 1600 plus 1500 plus 1400, 4500, 2000, 3700। This is sales in unit, okay? Now अब मैं सेल्स रुपीज में निकाल, रुपीज में। अब रुपीज में अगर निकालू तो सेलिंग प्राइस क्या था? सेलिंग प्राइस 90 एंड 75 का था, ऑयल का 90 था, सॉरी लुब्रिकेंट 90 है, ग्रीस 75 है। प्राइस इंक्रीज हुआ है कब से? जनवरी से। ओके, तो पहले 90 रुपीज के एंगल से निकालता हूँ। 90 इंटू 3750, 3,37,500। 3,37,500। नेक्स्ट, ये 34,800, 800 ग्रीस के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 2,38,500। दोनों को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो ऐड करते हैं, टोटल सेल वैल्यू विल बी हाउ मच? 5,73,300। गेटिंग? चलो 3410 मल्टीप्लाई बाय 3,06,900 and 2,915 multiplied by, suppose selling price is 75. If you multiply 2,18,625, calculate total sale value. 5,25,525। ओके, जनवरी का 2,88,300 आएगा सेल वैल्यू। नाउ प्राइसेस इंक्रीज, जो रिवाइज प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज 2,88,300। देन इट इज 2,04,050, 4,92,350, 3,72,000, 2,61,800, 6,33,800, 4,18,500, 2,84,900,
7,03,400. This will be your total sales. अब इसका कलेक्शन कर दो. 20% कैश सेल्स, 80% क्रेडिट सेल्स. कलेक्शन 20% कैश सेल्स, 80% क्रेडिट सेल्स. 573,300 का 80%, 4,58,640. 1,14,660. 525, 525 का 80%, 4,24,20. 1,05,105. 98,470. Three lakh 93,880. Is 6,760. कैश सेल तो जिस महीने हुआ उसी महीने आपको कहने से कैश रिसीव हुआ. अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स टू बी कैलकुलेटेड. कलेक्शन फ्रॉम डेटर कैसे निकालोगे? जो क्रेडिट सेल आपने किया था 50% will be received in the next month. 50% is outstanding for 50% of credit sales are collected in next month and remaining 50% in second month. 50% outstanding 1 month, 50% outstanding 2 months. Collection from debtors. Credit sales है. Hmm. 58, 640.
वन प्लस टू। चलो ये हो गया आपके पास। नाउ नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर इज कंप्लीटेड। लैग इन पेमेंट ऑफ क्रेडिटर 1 month, डायरेक्ट लिखेंगे। वेजेस टू बी पेड between 1 to 5th of the month due. So it means wages 3/4 will be paid during the same month. Payment of wages. चलो wages में दिसंबर से बनाऊंगा। I will prepare from the month of December. हाँ मतलब entire wages is outstanding and entire wages is paid in the next month. No need for preparing any working note for wages. Fine. Directly I can write. Direct expense also I can write directly. Admin, factory and admin. Factory overhead and admin overhead are paid 1.5 month in lag. Okay. Will prepare from November. One point five months means 1.5 months means half is paid in second month and half is paid in third month. For example, 1.5 months means November and December. November and December. Okay, November will be paid in the month of Jan after 1.5 months, means in second month, and remaining 50% will be paid in the month of February. Okay, November, December, Jan, Feb, and March. Fine. See, we'll write both overheads, factory overheads and admin overheads. See how much is factory overhead you have given? 35,000, 42,500, 37,500, 50,000 and 55,000. एडमिन क्या गिवन है देखो, आपको 56 गिवन है। दोनों का टोटल लेके एक साथ कैलकुलेशन करूंगा। ऑलरेडी क्वेश्चन लेंथी है। 68, यू शुड नो हाउ टू सेव योर टाइम। 53,000, 72,000 and 75,000. Now take your total. It is 91,000. 1,10,500. 90,500. Total overheads. See, 50% in second month and remaining 50% in third month. So 91,000, 50% half, 4,500 will be paid in Jan and 4,500 in February. 1,10,500 divided by 50%, 55 to 50.
will be paid in February, and 55 to 50 will be paid in March. Then this is 45 to 50. That's it. And this will be now take total of this. 1 lakh 750, 1 lakh 750, 1 lakh 6, 61,000. So if you take total 1 lakh 6, 250 will be for March. Now you can prepare now cash budget for 3 month ended. Now you have given opening balance. Opening balance आपको कितना दिया? 1,35,000. Add receipt. कैश सेल्स है आपके पास, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है आपके पास. देखो कैश सेल्स क्या, 98,470, 1,26,760, 1,40,680, 4,39,530, 4,07,150, 4,50,460. 6,73,000. चलो लेस करेंगे इससे पेमेंट. पहले पेमेंट ऑफ फैक्ट्री एंड एडमिन लिख देता हूँ. चलो 1,07,50, 1,07,50, sorry 1,05,000. It's 250, and finally 1,06,250. Then payment of wages after 1 month है.
आफ्टर 1 मंथ। तो दिसंबर का जैन में पे कर दो, जैन का फेब में, फेब का मार्च में, दैट्स इट। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस 1 मंथ आउटस्टैंडिंग है सेम वे, 1 मंथ आउटस्टैंडिंग। सो दिसंबर का जैन में जाएगा, जैन का फेब, फेब का मार्च, ये भी होगी। क्रेडिटर 1 मंथ, 1 मंथ सही। दिसंबर का जैन में लिखो डायरेक्ट मटेरियल, 1 मंथ के लिए कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है डियर, ऑलरेडी प्रॉब्लम लेंथी है, शुड नो हाउ टू क्विकली सॉल्व इट। 90,000 सारे एक्सपेंस हो गए मेरे, राइट, ओनली। हाँ, अब क्या मुझे ग्रेचुटी दिया था लास्ट में, ग्रेचुटी एंड वैल्यूएबल एंड फंड 8 लाख विल बी पेड इन द मंथ ऑफ मार्च। वैल्यूएबल एंड फंड 8 लाख, टोटल 8 लाख विल बी पेड इन द मंथ ऑफ मार्च, ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट 75,000 का जाएगा कि नहीं जाएगा, इंस्टॉलमेंट ऑफ बैंक लोन, सिंपल, 75,000 एवरी मंथ, दैट्स इट, सारा पेमेंट रिकॉर्ड हो गया। बी का टोटल ले सकता हूँ, 3 लाख टू 750, 2,84,500, 11,41,250, डियर क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी, 3,72,50, 9,04,160, deduct 6,19,660, this will become opening, 12,10,800, deduct, you will get 69,550, that's your solution। 1,10,500 आपने जैन और फेब में लिया है, एक मिनट, जैन एंड फेब में, एक मिनट, इट इज 1,05,000 नॉट 1,10,000, जस्ट वेट अप, आई विल चेक। 1,07,50, 1 लाख, सॉरी 1,05,000 होना चाहिए, 1,07,50 है, फिर 1,05,000 फेब्रवरी में आना चाहिए, जैन, राइट है, 1 लाख एंड 1,05,000, ओके। जैन में फिर 35,
हाँ तो टोटल 91 है ना, दैट्स ओके। नो डियर, बराबर नहीं है। नवंबर का बराबर लिया है। ले ले जैन में फैक्ट्री हो रहा है 30, एडमिन 56,000 है, तो बराबर है ना, वही लिया है ना मैंने। जैन में, जस्ट वेट। हाँ हाँ हाँ। एक मिनट, जैन का क्लोजिंग बोल रहे हो ना? जैन में 35,000।
55 to 50 ये मंथ में आना चाहिए। 75 300 here. That's it. 2 months के बाद 50% पे कर दिया। 50% will be paid after 2 months, मतलब third month and fourth month, like that. So finally, this should be your answer. See here, factory and admin is paid after 1.5 months. After 1.5 months का मतलब ये होता है कि it is paid in third month and 50% is paid in third month and 50% will be paid in fourth month. तो जो मैंने अक्टूबर में एडमिन एंड ऑफिस ओवरहेड इनकर्ड किया होगा अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर छोड़ दो,
दिसंबर में 50% जाएगा, जैन में 50% जाएगा, एंड सो उस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया है। चलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर, लेट्स सी दैट। मैसर बिस्गल टेक्सटाइल लिमिटेड is manufacturing and selling four type of PVC paver block which are used for laying in public park. The board of directors of Messer Bisalgar Tile Limited is considering a proposal for product promotion campaign which would cost the company 2,50,000. तो कंपनी को एक प्रपोजल डाला है कि आप एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 2,50,000 इनकर करो तो आपका सेल्स बढ़ जाएगा। द बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मेसर Bisalgar Tile Limited provide you the two alternative sales budget for the next financial year. So कंपनी के पास दो अल्टरनेटिव है। फर्स्ट अल्टरनेटिव इज दैट इज विदाउट प्रोडक्ट एंड विद प्रोडक्ट। सेकेंड अल्टरनेटिव, पहला प्रपोजल जो है इज विदाउट प्रोडक्ट, मतलब विदाउट सेल प्रमोशन, यू विल बी एबल टू सेल 2 लाख, 3,50,000, 3,20,000 एंड 1,90,000 विदाउट सेल प्रमोशन। और अगर आप प्रमोशन कर दें तो आपका सेल बढ़ जाएगा, देखिए 2,40,000, 3,80,000, 3,50,000 एंड 2 लाख। सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आर बजटेड एज फॉलो। सेलिंग प्राइस आपको दिया है, वेरिएबल में आपके पास मटेरियल है, वेजेस है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। Messer Bisalgar Tile Limited provide you with the following additional data. Variable production overhead is absorbed on a machine hour basis at a rate of 1.20 per machine hour. So variable production overhead are absorbed based on machine hour. Machine hour आपको 1.20 per machine hour दी है। Fixed overhead 35,000 per annum है। Production capacity during budgeted period is 8,90,000 machine hour। इसका मतलब अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं तो प्रोडक्शन करने के लिए मेरे पास टोटल मशीन आवर अवेलेबल कितने, 8,90,000 मशीन आवर्स मेरे पास अवेलेबल है। टोटल मशीन आवर अवेलेबल इज 8,90,000। प्रोडक्ट आयोन एंड जियोन कुड बी बॉट फ्रॉम द मार्केट। ये प्रोडक्ट अगर मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता हूँ और अगर मैं मार्केट से बाय करता हूँ तो आयोन विल बी बाय फ्रॉम द मार्केट एज 10.005 and Xeon will be buy in the market 15.50. Ion and Xeon, these two products can be available from the market also. The machine capacity will not increase after product promotion campaign. So we have limitation of 8,90,000 machine hour. It means machine hour is a limiting factor, we can say that. 8,90,000 hours से ज़्यादा use नहीं हो सकता है। Determine whether Messer Bisalgar Tile Limited should invest in product promotion campaign and advise how the production facility would be the best utilized. ओके, तो क्या ये कंपनी को प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इनकर करना चाहिए या नहीं इनकर करना चाहिए, ये हमको डिसाइड करना है, राइट। अब इस क्वेश्चन के अंदर वी कैन से दैट मशीन आर इज अ लिमिटिंग फैक्टर हमको नजर आ रहा है, मशीन आर, बिकॉज वी कैन नॉट मूव बियॉन्ड 8,90,000 मशीन आवर्स, right? And machine R is 1.20 per machine hour, which is included in variable production overhead. So definitely सबसे पहला पॉइंट आपको रैंकिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर है, और रैंकिंग करने के लिए आपको कैन आई से दैट बेस्ड ऑन मशीन आवर रैंकिंग करना पड़ेगा। और बेस्ड ऑन मशीन आवर मतलब कंट्रीब्यूशन को डिवाइडेड बाय आपको करना पड़ेगा मशीन आवर। कंट्रीब्यूशन कितना है 0.84, उसको आप डिवाइडेड बाय कर दोगे, वी कैन से दैट 1.2, 0.7 मशीन आवर आएगा। Okay, whatever will be the contribution, that will be divided by contribution, that will be divided by machine hour. So we will get contribution per machine hour, where contribution per machine hour is the highest. First, we will try to make that particular, we will try to make that particular product. So definitely there will be 4 ranking over here, right? और आप प्रोडक्ट जियो आयोन एंड जियोन जो है विच इज रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट है, तो हो सकता है कि ये दोनों प्रोडक्ट का रैंकिंग कम हो। It will be either rank 3 or rank 4 for these two product. Remember, right? क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट में भी अवेलेबल है, तो हमको देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट में अवेलेबल है, वी हैव लिमिटिंग आवर्स अवेलेबल, तो पहले हम वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट देगा।
और ये दोनों प्रोडक्ट अगर मार्केट से अवेलेबल है तो हम मार्केट से भी उठा सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, वी नीड टू कैलकुलेट, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू डू अ रैंकिंग। रैंकिंग करने के बाद फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं एडवर्टाइजिंग कंपेन नहीं करता हूँ तो मेरा प्रोडक्शन मुझे दिया है 2 लाख, 3 लाख 50, 3 लाख 20, 1 लाख 90, तो आई विल चेक बेसिकली व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट मिक्स, उसमें मुझे क्या मिलता है। और प्रोडक्ट मिक्स के एंगल से मुझे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। सेम कैलकुलेशन करूंगा इफ आई एम डूइंग, कैन आई से दैट, सेल प्रमोशन एक्सपेंस। ओके, चलो देखते हैं, लेट्स मूव, कैसे सॉल्व करेंगे इस हमको नाउ। आंसर फाइव, we can say that now. Computation of contribution per machine. ₹12, ₹14, ₹16, and ₹22 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल में है पहले मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स 5 to 0.84, 7.84। मशीन आवर्स, वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय 1.2।
Distribution per machine. 5.94. 7.12. Ranking. 1, 2. Rank 3 and rank 4. अब देखो rank 3 and rank 4. Ion and Xeon is readily available in the market also. Okay. Total hours available is how much? Computation of profitability without investing in promotion campaign. ओके, अगर हम प्रमोशन एक्सपेंस पे खर्चा नहीं करते तो क्या टोटल आवर्स अवेलेबल अपने पास सफिशिएंट है क्या, चेक कर लेते। डियर 8,90,000 है ना अपने पास। पहले हम क्या बनाए, फोकस किस पे करें, नियोन पे ना। नियोन, नियोन इज 3,50,000 यूनिट्स। देखो विदाउट इनकमिंग एनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वी विल प्रोड्यूस 3,50,000 यूनिट ऑफ नियोन। और नियोन बनाने के लिए कैन आई से मशीन आवर कितना जाता है, 0.6 ना। हाउ मेनी आवर्स इट विल कंज्यूम। टू लैख 10,000। दियर ए क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉम्बिनेशन है, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, हाउ मच इज बैलेंस। हमारे पास कितने आवर्स बच गए, 6,80,000। अब आप किसके लिए यूटिलाइज करोगे नियोन के बाद, पीबी के लिए। 1,90,000 आवर्स अवेलेबल है, सो मच 1, सो 1,90,000। ठीक है, अब देखो कितने आवर्स बचे। 4,90,000 आवर्स बच गए। चलो अब आप किस पे फोकस करोगे, रैंक 3 पे। रैंक 3 क्या है, इयोन। इयोन वी विल प्रोड्यूस हाउ मच, 2 लाख यूनिट ना, इंटू 0.7, 1,40,000 आवर्स विल बी कंज्यूम। फिर बच कितने हैं अपने पास, 3,20,000 आवर्स, सॉरी 3,50,000 आवर्स बच गए। नाउ अब किसके लिए यूज करूँ, जियोन। विदाउट इनकरिंग एडवर्टाइजमेंट वी विल प्रोड्यूस 3,20,000 और जियोन 0.1 है ना। ओ 3,20,000 फिर भी बच गए, सरप्लस आर, ओ देर इज नो शॉर्टेज, सरप्लस। वेरी गुड, सरप्लस आ रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सरप्लस आ रहा है अपने पास। सरप्लस आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, फिर जितने यूनिट है उतने बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जितने यूनिट्स है वो सारे यूनिट्स बना सकते हो आप, सीधा मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन करोगे। टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट निकालना है ना। निकाल लो। कंट्रीब्यूशन, पहला प्रोडक्ट क्या था, नियम।
2 lakh, 3 lakh 50, 3 lakh 20, 1 lakh 90. See, which should be multiplied by contribution क्या अपने पास निकाला ये देखो 4.16 4.28 3.30 and 6.30 ये देखो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आता है 2 lakh multiply by 4.16 8 lakh 32 3 lakh 50 multiply by 4.28 14 lakh 98,000 10 lakh 56,000 11 lakh 97,000 25 lakh 83,000 माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट 35,000 45 lakh 48,000 will be your net profit heading चलो अब सेम कैलकुलेशन करो आप if you incur promotion campaign expenses computation of profitability if promotion campaign expense incurred टोटल मशीन आवर्स कितने अपने पास 8 लाख 90 रैंक वन कौन था नियोन ही था ना नियोन कितने यूनिट्स बनाओगे 3 लाख 50 मल्टीप्लाई बाय आर इज 1 नियोन नो 0.6 2 लाख 28,000 आप नियोन बनाने के लिए जाएंगे तो बच कितने गए आप 662 नियोन के बाद क्या बनाएगा पीपी चलो अगर पीपीपी बनाऊं तो पीपी 2 लाख है 2 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1 2 lakhs 4,62,000 पीपी कितना 3 is ion so it is 2 lakh 40
which should be multiplied by 0.7. 1,68,000 आवर्स जाएगा इसमें, बच के चाहिए। 2,90,000, 2,94,000। और अब रैंक 4 कौन था? रैंक 4 था जियोन, और जियोन के पास मैं जा रहा हूँ। 3,50,000 है। नियोन का 21,000 कैसे आएगा? 3,50,000 आर इंटू 0.6, परफेक्ट है। 2,10,000 क्यों देख रहे हो? 3,50,000 यूनिट बनाऊंगा ना जतिन, सी दैट केयरफुली। जियोन 3,50,000, और उसका मशीन आर क्या दिया है जियोन का आपको? 0.7 ना। नहीं, 1 1 रुपी है, सॉरी मैंने गलती से 0.7। हाँ, 3,50,000 यहाँ पे शॉर्टेज हो रहा है अपने पास। शॉर्टेज है, कितने आवर्स का शॉर्टेज है देखो? 56,000 आवर का शॉर्टेज है। अब 56,000 आवर का अगर शॉर्टेज है, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6210, 3,50,000। नहीं डियर, 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे ना। उसका मशीन आर 0.6 है। चेक करो आप, एग्जैक्ट 0.6 आता है, पॉइंट में नहीं आता है, आप रॉन्ग बोल रहे तो सर उसका मल्टीप्लाई में 228 नहीं आएगा, 210 आएगा। हो। 28 किसमें? इफ प्रमोशन एक्सपेंस इनकर्ड बोल रहे हो क्या? जो सर आपने 8,90,000 में से 228 माइनस किया ना, तो 210 माइनस करना ना, 3,50,000 इंटू 0.6, 210 आता है। एक मिनट, एक मिनट, मैं चेक कर। हाँ, वो 3,80,000 है, 50 नहीं है। वो आपको 50 लग रहा है, 380 है, सॉरी। देखो, 228 आएगा, 3,80,000 है वो, ठीक है। चलो ना, अब 56,000 आवर्स अपने पास शॉर्टेज है। अब जितने आवर शॉर्टेज है वो हम क्या करेंगे? बाय करेंगे, भरेंगे। अब अगर बाय करना है तो बाय, या तो मैं आयोन करूं, या तो मैं आयोन बाय करूं, या तो मैं जियोन बाय करूं, क्योंकि ये दोनों मार्केट में अवेलेबल है। और ये दोनों मार्केट में जो अवेलेबल है, मेरे ख्याल से उसका प्राइस भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्या रेट में अवेलेबल है, चलो एक बार देख लेते हैं। ये देखो, 10.50 पे अवेलेबल है, 15.50 पे अवेलेबल, ये प्राइस में अवेलेबल है, ठीक है। अब ये प्राइस में वो अवेलेबल तो है, तो हम ये भी चेक करेंगे भाई, ये मार्केट में हम बाय कर रहे हैं, ठीक है, बाय कर रहे हैं, तो उसको माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अपना कितना है वो भी देखते हैं, और डिवाइड करेंगे मशीन आर से। तो देख पता चलेगा एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग पर आवर कितना आ रहा है हमारा। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग पर आवर मतलब जो मार्केट में प्राइस अवेलेबल है माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय मशीन आवर, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग पर आवर आपको पता चलेगा। और जहां पे एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग पर आवर कम होगा, कम होगा, कम, डेफिनेटली हम लोग वही प्रोडक्ट मार्केट से क्या करेंगे? बाय करेंगे, ठीक है। वही प्रोडक्ट मार्केट से क्या करेंगे? बाय करेंगे। तो कितने यूनिट्स बाय करेंगे ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ये हमने शॉर्टेज तो निकाली, ठीक है। नो, नो, आयोन एंड जियोन, ये दोनों प्रोडक्ट कैन बी बॉट फ्रॉम ओपन मार्केट एट
10.50 and 15.50 respectively. Company will buy any one of these two products where extra cost of buying per hour is lower, no? Therefore, extra cost of buying per hour. ठीक है, पहले I1, फिर C1। अब ये क्या प्राइस में अवेलेबल है? 10.50। व्हाट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने निकाला होगा 7.84 आयन। क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है देखो इसका? 7.84 और इसका 12.70। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 7.84। बाहर से खरीदूं तो 10.50, मैं घर में बना लूं तो 7.80 है, बराबर है। लेकिन बाहर से अगर खरीदूं तो मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट जो भी इनकर होगा वो इनकर इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास मशीन आर लिमिटेड है। तो मशीन आर जो लिमिटेड है, वो मशीन आर रेट क्या है? ये देखो मशीन आर रेट दिख रहा है आपको? इसको डिवाइडेड बाय 0.7 करो। सो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग पर आवर पता चलेगा, बाइंग पर आवर 3.8। यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा बाइंग कॉस्ट 3.8 है। ठीक है, ये हो गया। ये 15.50 में अवेलेबल है और इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12.70 था और मशीन आर 1 रुपी था। सो इट इज रुपीज 2.8। सो एक्स्ट्रा बाइंग कॉस्ट, since extra buying cost is least in case of Xeon, therefore Xeon will be buy from the out markets, will be buy from the market। Number of units to be buy, कितने यूनिट बाय करेंगे? इज इट हियर? रेट इज 1 रुपी। अपने पास शॉर्टेज कितने आते हैं? 56,000 आवर्स से डिवाइडेड बाय 1, कितने यूनिट्स बाय करेंगे? 56,000 यूनिट्स। दिस इज अ रेट 1 आवर पर यूनिट, तो 56,000 यूनिट विल बी बाय फ्रॉम द मार्केट। अब निकाल सकता हूँ टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। पहले आयन, आयन कितने बाय करूंगा? 2,40,000। ठीक है ना, मार्केट से थोड़ी बाय करना है। मल्टीप्लाई बाय 4.16 है ना कंट्रीब्यूशन। दूसरा प्रोडक्ट नहीं होगा, नियोन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। 3,80,000 यूनिट बाय कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन क्या है? 4.2 है। जियोन, बी केयरफुल। जियोन मैन्युफैक्चर कितने का?
मैन्युफैक्चर जीरो 2,94,000 ही करोगे, बराबर है। 2,94,000 ये देखो, 56,000 तो मार्केट से बाय करोगे ना। मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसका कंट्रीब्यूशन ये, और जो मार्केट से बाय करोगे उस पे 0.50 कैसे। मार्केट में क्या रेट पे अवेलेबल है, 10.50, कंट्रीब्यूशन से माइनस किया होगा, सेल से माइनस किया होगा परचेज प्राइस, तो 0.50 है आपके पास। चौथा प्रोडक्ट क्या, पीपी है। पीपी 2 लाख यूनिट है ना, ठीक है, उसमें तो पॉइंट नहीं है, 6.3 के रेट पे बाई का। अब ये सबको मल्टीप्लाई करो, ये 28,000 आएगा। सेल में से परचेज प्राइस माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन इतना बचा होगा। देन 12,60,000, ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन, और उसमें से माइनस किया आपने फिक्स कॉस्ट 35%। और प्रमोशन एक्सपेंस भी तो करोगे ना ये केस में। प्रमोशन एक्सपेंस कितना, 2,35,000 कर गया ना, 2,15,000 कर गया, 2,50,000 प्रमोशन एक्सपेंस भी तो इनकर गया, वो भी माइनस होगा। अब देखो आपके पास प्रॉफिट कितना। 45,98,000 का प्रॉफिट है। पहले प्रॉफिट कितना आ रहा था, 45,48। Profit is increased by rupees 50,000 if promotion expenses incur. Therefore, it is advisable to incur promotion expense. That's your final answer. Clear, everyone? बिल्कुल clear. आपने मुझसे यही पूछा था कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइन एवरीवन, सबने कंप्लीट। मैं ये सबको फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप सबके पास मैं भेज देता हूँ। इसका सोल्यूशन तो आप सबके पास आ जाएगा पीडीएफ में। फाइन, बाय एवरीवन।